So very good morning, everyone. Welcome to the AFM class, right? So as I was saying that, please introduce yourself. Kanishka has introduced herself, right? So now I think who should go ahead? Go ahead, Kushal. Introduce yourself. My name is Kushal. Mm-hmm. Currently, I'm pursuing BCom Honors with ACCA at PS University, Bangalore. I'm basically from Bangalore, sir. PSU. I have taken Yes, sir. online class for PSU. I think Is online it, sir? FM, some or the other where I don't know. Yes, sir. While I was at a very old employer. I've come to Bangalore and I've visited I think your KJCC college, SJCA college. Then I think one more college was there. Online mein I think I have taken a lot of colleges in Bangalore, Kerala. I cannot even Kerala also I've been to. I've been to Jaipur. I've been to Mumbai. I've been Pune also symbiosis, right? I have Yes, taken a sir. batch there as well. Vishnu also Bangalore, no? Or Kerala Vishnu. I think if you are speaking, we are not able to hear you. He was one of the first or second batch of FM that I took. Vishnu was the only student in that. As in his class, I had a lot of students, but we both used to talk. I have those old recordings also. Albina is from our FM, and you could actually took ATX last quarter with us, right? And I think Kirti was also FM or somewhere with us. Karthik, chalo, introduce yourself. Let me know. As myself, Karthik from Bangalore, Haryana. I Mm, give, I give, I will clear all the 9 papers of ACC and AFM given September. uh, all 9 papers. He was our FM student also. You could actually Yes, too. sir. No, sir. Yeah, UK tax is Exam. exempt too, right? Okay. Come on, Keshav. Keshav is there. Keshav ko last batch. Keshav was entered the batch in between, so he's going to give in December, September only. But I gave access to both the things. Hey, Keshav, can you hear me? Oh no. His mic is not working. Okay. Albina, what about you, beta? Good Yes, morning. sir. Good morning, sir. Introduce yourself, right? Albina was there, I think, for FM also with me, right? No, Albina. Yes, sir. FM and UK tax and ATX UK. ATX now AFM, right? Yes, sir. Now next quarter we are also launching SBR, right? This quarter also we have SBR, right? But it's a weekday SBR batch. If anyone is interested, ekdam, doing from base, rather it will be 7 days, right? If anyone wants to do SBR ke 9 paper exemption, wants to do SBR from ekdam base, like from FR, FA, correct? So the faculty right now is taking an SBR batch as well, right? He is going into very detailed, right? We've talked about it. It's a batch for this 9 paper exemption people only, right? So even our AFM batch is such that where you have 9 paper exemptions, okay? We start from very basics, right? From the discounting, this compounding formulas, right? Go ahead, Ritik. Chalo, introduce yourself. Good morning, sir. I have Good. This is my first professional level exam, if AFM, and I have two exemptions in tax and law. And my last exam was FM. I did FM by your recordings only. So Yes. I That told. we talked. Where is Shobit? He did not come. No, sir, he is out of station, I guess. ओके हाँ आज ये वीक आई थिंक आफ्टर एग्जाम वीक नो एवरीवन इज आउट ऑफ स्टेशन ये वीक कोई नहीं आएगा नेक्स्ट वीक आई थिंक everyone will come okay no problem Keshav and Vishnu if you could introduce yourself on the message that will also work Kirti can you hear me Shri Kirti how are you doing health wise now I'm good, sir. Thank you. better now this time no plan nothing No, right no, sir. हाँ ठीक है so introduce yourself she's from Hyderabad correct I've been to Hyderabad as well right बोलो बोलो Hmm. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ चलो चलो क्विकली Good morning, I'm Cheetu. I wrote all the papers. F1 से every paper I wrote by myself. ओके This would be my first professional paper. फर्स्ट प्रोफेशनल पेपर ओके हाँ तेरा AFM योर AFM is only there no अब AFM we are gradually now going to next quarter that's why I'm planning SBR ये AFM हो जाए next quarter SBR then if you want to give AAA then AAA
or whatever optional paper you want to give, and at the end SBL that is there. Chalo, theek hai. I think we can start, right? Right. So let me introduce myself, right? You all have introduced yourself, all lovely people, right? I have a very small career of what, somewhere around what, 14-15 years, correct? In the industry, first what, 10 years, and then since the last 3.5 years, I am teaching, correct? Now, actually, I started my career with what, chartered accountancy, correct? Most of you would know that, know my story, correct or not? My story is very simple. Okay, I started chartered accountancy. I started working, as analyst and all that. Just let me dive into your notes. Ek minute. Let me give you the basics of what the class also. Correct. So let me open up a note for you. AFM main class. Because we'll have theory ka thoda side mein classes that will go on. AFM main class September 2025. Correct. Chalo. Let's start with that. What happened? We good morning. Some problem with the OneNote, right? आ जाओ. So let me just introduce myself, right? My name is Chinmay Shah. Almost everyone I think knows that. I'm an ACCA affiliate to start with, correct? Right? A affiliate की spelling देखो. ACCA affiliate, correct? Right? ACCA affiliate, and I've been actively teaching since I think last 3.5 years, correct? I have taught over what, AFM ka bhi, FM ka I have taught 32 batches. Tax ka I have taught around 12 batches, correct? ATX I have taught around 3 batches, correct? AFM अभी हो गया ये 4th या 5th batch है, correct? 5th नहीं, 5 done, 6th batch, correct? 3 done at the earliest employee, now 3 done here, correct? In the last 3 quarters I have been teaching AFM, right? AFM, ATX last quarter we took, ATX we took, earlier employee I took 2 batches, correct? So I have around 50-60 batches का थोड़ा बहुत छोटा 50-55 batches experience है. MA also I have taught. MA 5 batches I have taught, right? Now I am going to venture out into PM, right? I used to teach costing before to university students. I like costing as a subject. I like FM as a subject, correct? FM, I think most of you have seen some or the other, what? Tell me. Recording or some or the other, where a lot of students have seen some or the other, where YouTube ho gaya, idhar ho gaya, udhar ho gaya. You have seen how I teach, correct? So around chota sa 50-60 batches hold worth portion, right? I started my career somewhere in 2011, right? Where I joined CA articleship, correct? CA articleship I joined around 2015. Once my articleship was done, I was giving my CA final attempts. I was working with what, one of the firms, right? One of the companies. It was a travel company, correct? Where I was an accountant, and it was a group companies. So I used to handle 4-5 companies ka what, accounting, taxation, finance, everything. Because see, whenever you join a very small or small level firm, or maybe a mid level firm, right, or a small corporates that are there, right? So in that case, what happens, that one person only looks after everything. So if I have to take loan, I only have to go. Accounting entry, I only have to do. I was actually an accounts manager there. Two or three accountants, right, were working in my team, correct? Right. So I was the manager, right? But
I have worked. The average age of all the accountants, correct, was more than 45 plus. And I was what at that time 21 years old, 20 or 21, I think. 2015 में तो I think कितना 23 years old. And I was a boss of what 45, 50 years old, correct. So understand the situation I was in, right? So all this was going on. Then I think 2018, 19 के आसपास और 17, 18, 2 years I worked there. 17, 18 I was giving my CA final attempts, right? I then started working as a financial analyst, right? With one of the where I was a partner with one of the bankers. So it was an ex-banker who was 12 years into banking, correct? So I used to work as a financial analyst. We work more into debt finance, correct? More home loan हो गया, your loan against property हो गया, project finance हो गया. All these things we have worked, right? I have not worked too much, I would not say. Here also we used to do equity analysis, but not too much into equity analysis, but more of into debt finances, correct? Now see, all that I had done, this 3-4 years articleship, 1 or 2 years, accountant and all that helped me read balance sheets very nicely. So at one time in my finance career, right, as a financial analyst, right, what used to happen is my partner who was just an MBA, I'm saying purposively using that term, my partner who was just an MBA, correct, used to give balance sheets to me. He wanted me to read the balance sheets and understand what the problem in the balance sheet is, correct. Me being a CA student looking at, I don't know, abhi tak I must have seen can't even count 500 to 1000 balance sheets, different what, because where I was working we had 100 150 clients, so unka balance sheet to I had seen, correct. Going at travel company mein where I worked and on and off, right, I used to work, I used to do what, this return filing work, company ka, individual ka, all that, right. So after looking at so many balance sheets, now if I look at the balance sheet, correct, I can make out what is the problem, where the issue lies, all that stuff, correct. So that is there, right. During I was doing this travel company 2017-15, say I was working with what, a lot of CA faculties. Somewhere down the line, right, teaching is to be done, correct. Where my journey started, where I have ended up, correct, is nothing short of a fairy tale, correct. अगर आपको लगता है ना ऐसा यू नीड इंस्पिरेशन, सर वी नीड इंस्पिरेशन, करेक्ट, तो मैंने बोलूंगा मेरा लाइफ, बट माय लाइफ हैज बीन ऑल हेवायर, करेक्ट, but it has reached wherever it has reached, right. 6 months ago tak I was working somewhere, correct. 1 year ago tak, if even 2 years ago or what 1 year ago, right, if someone had told me that I will start my own organization, I would have laughed on that person, correct. 1.5 year ago tak, right, in the last I think a year or so, I seriously thought with students being what, the epicenter, I don't know why, but I've always felt that students need to be the first thing in an organization, correct. So उस वजह से I always thought that wherever I was working, right, that student angle was always there. When students are not happy, I am also not happy, correct, right. So that was something that we could what work out, right. So आप लोग, you are blood and sweat of my super infinity super infinity education, okay. तुम्हारे बगैर ये गाड़ी आगे चलेगी नहीं, correct. So always what you should do, tell me, कोई भी चीज में आप इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हो, राइट, देखो, राइट, आई started working 2015 से, right, 2022 I landed in whatever, right, from 17 18 I think up to 2019 20 I was working here as a financial analyst. 21 में और 2020 एंड से लेकर 21 I was virtually unemployed for 1.5 year, कोरोना टाइम, याद है ना, everyone was having difficulties, tell me, you all must have some or the other, what, tell me, corona story, yes or no, tell me. Yes, sir. Most of you must be in college, no? Tell me. Or school, college, what, 12th, College. right? College. Anyone who was not in college? Good morning, Roshan. Sir, I was in school. You are in school. You are in second year now, ना बेटा? Yeah. हाँ, तो बराबर, स्कूल बराबर है. रोशन क्या बोलता है?
Roshan I is was there? also in school during the COVID You were times. also in school, no? बराबर है, देखो वही कह रहा हूँ मैं. तो 2021 में आई वॉज वर्चुअली अनएम्प्लॉयड. ठीक है, मतलब काम था नहीं कुछ, राइट. आई हैड सम पर्सनल प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन, करेक्ट. तो मैं उसी में उलझा हुआ था. 2022 के आसपास, राइट, 21 एंड बोलो या 22 स्टार्ट, आई गॉट एम्प्लॉयड इन आई थिंक अ वेरी लोकल व्हाट पुणे टीचिंग का कुछ था, उसके अंदर आई गॉट एम्प्लॉयड, करेक्ट. 21 एंड समझ लो, राइट. Then from there, I think in 3 months only, 3 to 4 months I did it, right? And then in 4 months I shifted to another organization where I worked around 1.5 years, right? Even 2020 में आप मेरे को आके बोलते ना कि सर आप टीचिंग में जाओगे, राइट, यू विल बिकम अ टीचर अगले 5 साल में, आई वुड हैव लाफ्ड ऑफ, राइट. मेरा कोई प्लान नहीं था लाइफ में, करेक्ट. मेरा प्लान था, क्या था, सर्वाइव करना है, जीना है, राइट. तो इफ आई कैन डू समथिंग लाइक दिस, अगर आप कोई जॉब में हो, यू आर नॉट वेरी हैप्पी, करेक्ट, तो आप कभी भी करियर शिफ्ट कर सकते हो, राइट. आई एम टेलिंग यू दिस बाय माय ओन व्हाट स्टोरी एंड माय ओन हार्ड वर्क, राइट. ऐसा है बॉस, करेक्ट. तो जो भी मैंने किया है पिछले 3-4 साल में, मेरे को खुद को भी बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं कर सकता था, राइट. तो हो गया, करेक्ट. तो देन फ्रॉम देयर आई शिफ्टेड टू वन मोर ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई टॉट ऑलमोस्ट 2 years, करेक्ट. 2 साल हो गया, right. So with combined around 3.5-4 years का 2022 या 21, 22, 23, 24, ये जो सारा 25 अभी ऑलमोस्ट, राइट. I have started my own organization. I have got, by God's grace and by students, what God's grace तो क्या, by students love and trust, जिधर भी पहुंचे उधर पहुंचे, करेक्ट. ऑलमोस्ट लास्ट क्वार्टर वी डिड 50+ स्टूडेंट्स विदाउट एनी एडवर्टाइजिंग, कुछ भी नहीं करते अपन, करेक्ट. जस्ट प्योर व्हाट क्वालिटी से अपन इधर आए. जितने भी पिछले बैच में शायद लोग बैठे हैं, मे बी कार्तिक वाज देयर इन लास्ट बैच, राइट, Yes, राइट. आप पूछो, श्री थी, कीर्ति थी, राइट. स्टूडेंट्स को क्या है, अपना सारा काम स्टूडेंट के लिए, राइट. सो वेर एवर नाउ सी वी आर स्टार्टिंग दिस क्लास ऑन अ वेरी गुड नोट, ठीक है. और मेरा क्या बोलना है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जस्ट वन वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज जस्ट ट्राई टू बी व्हाट वोकल, राइट. आप बोलते रहो क्लास में. यू हैव एनी डाउट, आस्क डाउट्स, करेक्ट. डाउट्स जितने आएंगे उतना अपने लिए अच्छा होगा, करेक्ट. मोर एंड मोर. सो इट इज गोइंग टू बी अ टू वे व्हाट रूट. ऐसा नहीं है दैट आई एम ओनली डूइंग सम व्हाट प्रवचन, करेक्ट. एवरीवन नोज दैट आई डोंट गेट एंग्री एट ऑल, करेक्ट. किसी इतने सारे ऑनलाइन इन दिस 4 years, नेवर इन अ क्लास एनीथिंग हैपनिंग एट होम और एनीथिंग हैपनिंग एनीवेयर एल्स हैज एंटर्ड इनटू द क्लास एवर. आज तक कभी नहीं, और आज के बाद भी कभी 10 साल में ऐसा कभी नहीं होगा दैट विल एंटर द क्लास, राइट. सो स्टे व्हाट टेल मी एकदम रिलैक्स्ड के, राइट. कोई टेंशन नहीं है, करेक्ट. you can ask anything you want, any kind of doubt, any kind of problem you have, you all everything will be solved here in class only, correct. आपको कोई दूसरा प्रॉब्लम है, कैन वी व्हाट, हाँ पहले बिफोर वी स्टार्ट, राइट, एक मिनट में रीनेम करने दो. इसको इंट्रोडक्शन नाम दे देते. हाँ, नाउ 1 or 2 थिंग्स बिफोर आई स्टार्ट. इंट्रोडक्शन. One or two things, right. एक तो you'll have to have a notebook, correct. That is a must. Notebook, pen, pencil, highlighter, whatever you want to use, ruler, scale, put putty, whatever you want to use, correct, right. Then you need to have a calculator. You will say, sir, but calculator only, I think the first 5 lectures, right. 5 भी नहीं, बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ. First 3 lectures you will need calculator. 2-3 lectures, because we are doing a transition from what, tell me, FM to AFM. 2-3 lectures. उसके बाद मेरी गारंटी, correct, my guarantee that you will not use calculator, you will do all calculations on Excel. कहाँ करोगे आप? All calculations on Excel. We have to become Excel experts. At least what is required for our exam, right? We have to become what? Tell me, a Excel prowess.
अपने को एकदम we have to become expert at Excel. There is no option at all, right? Because your answering screen is only going to be majorly Excel in all the 3 questions that are there in AFM, right? Excel is a must, right? Any of you who does not know Excel at all, sir, देखा ही नहीं Excel screen. We have never even opened an Excel. ऐसा कोई है क्या क्लास में? Tell me. Anyone who's there in class, right? ऐसा है तो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं. We'll any whichever way we are going to do it in quite in detail. So don't worry about that. Correct? Right? Class का नियम है 9 AM we start. Correct? Right? Generally 10:30. हाँ, we have what? Total 30 minutes break. 30 to 35 minutes break. 30 minutes, right? In the 4 or 5 hours that we do, 30 minutes break. First break will be around 10:30. So 9 if we start, 10:30 AM we take a break. 1.5 hours. Correct? So we have 9 AM to 10:30 AM. Right? Then after that we start. Let's say we take a what now? There are 2 options. Right? Either you want what? 15 minutes 2 breaks, or you want 20-10 ka 2 breaks. That is on the students. First break 20 minutes, second break 10 minutes, or equal 15 minutes. You tell me, क्या करना चाहिए? 15, sir. Yes, sir. 15. Everyone 15. नाश्ता विस्टा ब्रेकफास्ट करके आए. That's why I keep it 9 AM. 8:30 रखा तो फिर ब्रेकफास्ट के लिए टाइम देना पड़ता है, right? So 9 AM. So we do 15 minutes into 2 split. Correct? चलेगा? So we start again at 10:45, right? We go up to around 12:15 or 12, correct? Then we take a 15 minutes breather. Probably continue to 1:30 PM, right? If need be, जब भी जरूरत पड़ेगी, we can go up to 2 PM. आपको ना at times, this is from my experience, right? You could ask Kirti and Karthik, those are last batch students. कभी-कभी 2 बज जाएंगे या 1 का 1:30 हो जाएगा. You will not even understand. क्या बोल रहा हूँ कार्तिक, बराबर है ना? Tell me. Yes, sir. It is, we will get so engrossed in solving one question or doing that example or understanding that concept, correct, that you will not understand time, right? But I will make sure that these gaps are taken care properly, right? That is how the class will go. Notebook हो गया, calculator हो गया. This has to be a two-way communication. You have to communicate. Without you communicating, right, there is no what, tell me, meaning to all of this. Second thing, right, anything that I teach, correct, I will give you strong logics, I will give you strong what, tell me, derivation of formula, jahan kahi bhi, wherever it is required, correct, we will go into detail of every concept that is there. Most of you know me, most of you know that I do it, correct. Still, if any time if you feel the concept is not clear, right, please raise your hands, tell me, right, I will answer the minutest of the query. Even don't think, or what will Ritik say, what will Kirti say, what will Kanishka say about my query or any other student say, right? First day only I'm telling you, correct? It's an online class. You are not even going to meet anyone. बराबर है क्या? हाँ, other way, right? Now let's say maybe not only for you all who are sitting in class, but there are going to be people who are going to view this recording, correct? So for those people also, and for you sitting in class also, you are going to almost come weekly to class, right? But if you have doubts, let's say 21st 22nd we do certain things, and I will give you homework to do, let's say X sum, Y sum, Z sum, correct? If those homeworks are given, kindly take it seriously, right? Weekly, whatever homework is given, kindly try to complete it within the week. Theory classes that are going to be there, right, will be generally in the week, correct? It will be early morning or in the evening late, whatever it is, correct? Try to attend most of the classes, correct? Because if you attend classes and complete your studies in what, in the class only, right, now you won't believe, but last quarter that we did exam or this class, right, we did almost 35 out of the 35-40 questions or whatever, 50-60 questions that are there in the book, 70 questions, almost we did more than half questions in class only, right? I can show you the Excel sheet of last quarter.
Literally, students were at the end saying that, sir, bahut ho gaya. We are okay. Paper was also what? Somewhere around okay. But the biggest challenge that students face is speed, right? If you do less practice, you will not be able to develop speed. So whoever is, I think Kushal and Kanishka, right? You have to give in that extra effort, as you have not given or not done anything at what your skill level, correct? So you will have to give more time for practice, correct? See, concept I'll take care, questions I'll take care, but the speed of solving, correct? आपको ध्यान देना पड़ेगा इसके ऊपर, correct? Those whoever is taking this recording or whoever is viewing this recording, if you have not given your skill level papers, correct? There is no disadvantage, but just that to match that what prowess, you have to practice more. Let's say if a normal student is doing 30 questions, you have to do 60 questions or 45 to 50 questions at least. Then you will be at a matching speed, correct? Because you will require more practice. So from first day only, when we are doing Excel, correct? So try to what? Do questions with me. I will give you time. We will solve most of the questions together, right? You don't need to worry about it at all, correct? So speed is there. Less practice, more practice you have to do, correct? Speed ka to the more you practice, the more you will be comfortable in the exam, correct? That is okay. One more thing, we will be using the Kaplan book, right? Now don't worry, what has happened, the Kaplan book or the AFM portion per se has not changed. Most of you had a doubt, sir, September 2025 all subject portion is changing other than UK tax. UK tax change in June, UK tax and ATX, correct? Change in June, sir. All other subject change in September 25, correct? Don't worry, right? No change in portion. As of now, we could use the old material that is there with us, right? Study text तो you don't even require. I'll give you the study text. वो हो जाएगा कहीं ना कहीं, correct? You don't need not worry about it, correct? Right? For the questions, we could use what? Tell me. The book, we could do that, no issues, right? We could use Study Hub as well, correct? From there also we can solve questions, right? But majorly whenever the new book comes up, correct, or whenever what Study Hub newly comes up, we'll do the questions that are different. Old and new major different hai. We will do that questions, so you need not worry about it, right? I will try that most of the questions are done in class. You have most of the practice. Any other doubt regarding basics of the what batch? किसी को है क्या? Tell me. Right now is the correct time. Tell me. है क्या? और कोई doubt? बोलो बोलो. Can I go ahead? Right? Sir, Anything else? Yes, Alvina. sir, what platform will you be using for uploading the lectures this time? Yes, same. We had last time, no? That Reoplay, Okay, sir. right? Anyone who's using an iOS device for wherein you are going to view the lectures, recordings, कोई है? iMac वाला कोई? नहीं बोलो मेरे को, because I have to see if it is normal Microsoft या Android पे uploading, it is normal uploading. If I have to do iOS or something, I have to take a extra step and then do it. इसलिए पूछ रहा हूँ. नहीं तो you will not be able to see the lectures. Everyone having a Microsoft PC only? Tell me. किसी का ऐसा कुछ अलग नहीं है ना? Yes, sir. हाँ. Anyone having something, some other PC? Kindly call me. I will accordingly upload the lectures. Correct. Generally, first 3 lectures that we are taking, right, are generally available on YouTube for viewing. Correct. So first 3 lectures are uploaded on the YouTube. Correct. You can view the recordings from there. Right. So second, 21st and 22nd. Even one more thing that I would like to tell you, if any of your friends want to join, right, the group is open, you can add them to the group, correct? No issues on that part. They can come up in class, sit, what, tell me, enjoy the class that is there, right? If they want to take admission, always open for admission as well, right? The only source of advertisement I have is my students, okay? So kindly, if there is anyone who wants to join, directly add them into the group and tell them to sit for the class next Saturday, Sunday. That is going to be maybe 3 night or 5 lectures I'll put up free for students. After that, we can close the admission, right?
Anyone having any other doubts? Tell me. Bolo bolo. Can I go ahead? First, let me introduce AFM ka portion, right? Then let me go into what analysis of that portion and so on. Chalega. एक minute. Let me also just open up. ठीक है, आ जाओ. Can we go into AFM portion? बोलो. Everybody, what? Tell me. Okay with it? आ जाओ. This you should draw in your notebooks, correct? The AFM chart that is there. This is the whole syllabus chart that is there, correct? First, we'll start today with the basic investment appraisal techniques. Mind you, these techniques will be used till the end. You go till the end. Yeah, investment appraisal techniques that we are going to start today are going to be what? Techniques मतलब basic investment appraisal. IA means investment appraisal. Basic investment appraisal. Correct? Then you have what? Your part of foreign NPV. Foreign NPV. Foreign NPV. Foreign NPV. Correct? You wrote foreign NPV. एक मिनट रुको ठीक है. इधर लिखो बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में. एक मिनट रुको डोंट राइट लाइक दिस. इधर लिखो एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल. राइट. एक बेसिक फिर एडवांस्ड. करेक्ट. एडवांस में यू कैन राइट फॉरेन एनपीवी. बेसिक तो उधर कवर हो गई. फॉरेन एनपीवी, बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल. ठीक है. फिर यू कैन राइट कॉस्ट ऑफ कैपिटल. याद है करें कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल for those who have done FM. Those who have not done FM, welcome. Cost of capital and sources of capital plus APV. APV. So इसमें ऐसा लिखो बेटर. दो पार्ट. WACC plus risk adjusted WACC. WACC plus risk adjusted WACC और इधर adjusted present value. Big brother of NPV. इधर ना बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल प्लस ऐसा लिखो रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर. प्लस ऐसा लिखो. ये एक काम करो, ये इधर रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर लिखा है. ठीक है, आ जाओ इधर आ जाओ. कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सोर्सेज ऑफ कैपिटल, WACC, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू. उसके बाद यू हैव फाइनेंसिंग डिसीजन प्लस डिविडेंड डिसीजन.
फाइनेंसिंग डिसीजन प्लस डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन प्राइसिंग, नेक्स्ट है ऑप्शन प्राइसिंग। ऑप्शन प्राइसिंग में बेसिकली बीसॉप मॉडल यूज होता है, बीसॉप मॉडल, बीसॉप मॉडल। बीसॉप फुल फॉर्म इज ब्लैक एंड स्कोल्स ऑप्शन प्राइसिंग मेथड। ब्लैक एंड स्कोल्स, SCHOLES, ब्लैक एंड स्कोल्स ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल, राइट। बीसॉप मॉडल, ब्लैक एंड स्कोल्स ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल, right? After that you have something called as risk management. Confirm question on this comes in exam. रिस्क मैनेजमेंट, बराबर है। रिस्क मैनेजमेंट में देर आर 3 पार्ट्स। बेसिक्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, RM मतलब रिस्क मैनेजमेंट, फॉरेक्स रिस्क मैनेजमेंट, अभी हेजिंग भी बोलते हैं उसको, मैनेजमेंट या हेजिंग, राइट। एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। लास्ट 2 थिंग्स, बिजनेस वैल्यूएशन एंड लास्ट बिजनेस वैल्यूएशन, business reorganization. Let me open up your text as well. Don't worry, I'll share it with you. Correct. आ जाओ जरा. Is the book visible to you? Tell me. Business reorganization and reconstruction. अगर आप स्टडी टेक्स्ट के मायने में पूछेंगे, राइट, लेट मी मैप द चैप्टर्स, करेक्ट। दिस इज चैप्टर 1, दिस इज चैप्टर 2 एंड 3। बेसिक चैप्टर 1, 2 इधर आएगा, एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, इंटरनेशनल ऑपरेशंस एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इस चैप्टर 3। फिर फाइनेंसिंग डिसीजन ये चैप्टर 4 एंड 5, करेक्ट। 6, 7 ये वाला पार्ट है, चैप्टर 6 एंड 7 ये रहा।
chapter 6, both these actually, chapter 6 and 7. ठीक है, this is chapter 8, then 9, 10, 11, ये तीन, chapter 9, chapter 10, chapter 11. ठीक है क्या? बिजनेस वैल्यूएशन, अभी इसमें आपको स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स ऑफ एक्विजिशन दिख रहा है, राइट? बिजनेस वैल्यूएशन प्लस एक्विजिशन ऐसा लिखो, उसमें है चैप्टर 12 एंड 13, करेक्ट? दिस इज चैप्टर 14. काम खत्म. छोटा पोर्शन है, 100 150 आवर्स लगते हैं, ज्यादा नहीं है, करेक्ट? 100 120 130, करेक्ट? पिछले बैच में वी हैव डन अराउंड 150 आवर्स, ज्यादा नहीं किया, राइट? नॉट टू मच, राइट? So this is your AFM what syllabus at a glance, right? Now let me be very honest, correct? First let me map the paper as well, then I will come back here and I will tell you what comes where. ठीक है? सेक्शन ए में क्या आएगा, सेक्शन बी में क्या आएगा, सेक्शन सी में क्या आएगा, करेक्ट? Have you written this down? Can I go ahead? Leave some lines Yes, below sir. this, correct? Now let us talk about the AFM paper pattern. There are two sections in the paper. Section A, section B, right? Generally section A 50 marks, one question, or one, I should rather say one write up, right? Around minimum 4 to 7 questions, जाने के लिए 7 ज्यादा हो गए, 4 to 6 questions, correct? In that I have seen majorly, right? In that also there is a catch, correct? That you have professional marks, 10 professional marks are given, right? And actual questions are of 40 marks, right? Here, on an average, you will see a breakup of 25 to 30 marks practical. 25 तो minimum, 20 to 25 minimum, 20 to 30 marks लिखता हूँ. कभी कभी आए तो 20 marks भी practical आए, right? 10 to 15 marks theory. हाँ मतलब that's what I'm trying to say, right? 10 professional marks depends on what, how you write the paper, what you do in the question paper, वो सब. Section B, 2 questions, correct? 25 marks each. So how is the breakup? 25, 25, correct? 25 में you have what? The professional marks are 5 marks, 20 marks actual question, correct? In that also you will see minimum 12 या 10 to 15 बोलो, 10 to 15 practical, correct? 5 to 10 marks theory. सेम इधर भी ऐसे ही आएगा, प्रोफेशनल मार्क्स 5 marks,
20 actual question, 12 to 15 practical, 5 to 10 theory. ठीक है क्या, देख लो. एनी प्रॉब्लम विद दिस, बोलो. No, sir. यस रोशन, बोलो ना. Sir, what is this one write-up under section A? क्या वन राइटअप मतलब एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, वन क्वेश्चन, Okay. So, एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, राइट, एंड यू हैव टू अकॉर्डिंगली व्हाट आंसर द क्वेश्चन. सर सेक्शन ए में ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एक एक करके आते हैं, केस वाले आते हैं. केस स्टडी डायरेक्ट. तो ऑब्जेक्टिव अभी भूल जाओ, ऑब्जेक्टिव की पेटी बंद करो, स्किल लेवल में छोड़ के आओ. करेक्ट. 50 मार्कर, Okay. राइट. यू विल हैव प्रैक्टिकल के लिए, यू विल हैव टू यूज वर्ड एज वेल एज एक्सेल. यहाँ पे बहुत वर्ड भी यूज करेंगे प्लस एक्सेल भी यूज करेंगे. सर वाई वर्ड, प्रैक्टिकल है तो एक्सेल में होना चाहिए. नहीं, यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट अ रिपोर्ट यर, रिपोर्ट टू मैनेजर, रिपोर्ट टू XYZ पर्सन, राइट. वो आपको सब लिखना पड़ेगा, राइट. तो एज एंड व्हेन आई एम डेवलपिंग द पोर्शन, राइट, आई विल आल्सो डेवलप द टेक्निक्स ऑफ राइटिंग द रिपोर्ट, राइट, फॉर्मेट्स एंड टेक्निक्स ऑफ राइटिंग द रिपोर्ट. ठीक है क्या, हैव अ लुक. अभी ना बहुत लोग पूछते हैं, लॉट ऑफ पीपल आस्क, और सर सेक्शन ए में क्या आएगा, सेक्शन बी में क्या आएगा, राइट. अभी लास्ट क्वार्टर आई हैड प्रेडिक्टेड, राइट. अभी क्या मालूम क्यों, राइट, मन की एक कोने से कुछ एक निकला था. करेक्ट. आई हैड थॉट कि भाई, राइट, अभी तक कैसे होता है जनरली सेक्शन बी में ना, डू यू सी दिस रिस्क मैनेजमेंट पार्ट, टेल मी. ये रिस्क मैनेजमेंट पार्ट दिख रहा है आपको. एक क्वेश्चन ना 25 मार्कर 100%, मेरे खुद के एग्जाम में, माय ओन एग्जाम, रिस्क मैनेजमेंट का, फॉरेक्स रिस्क मैनेजमेंट और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, वॉट एवर, वन आउट ऑफ द टू यूज टू ऑलवेज कम एज अ 25 मार्कर. बराबर बोल रहा हूँ, टेल मी. दिस बेसिक्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट थियोरी एंड दिस इधर फॉरेक्स रिस्क, नहीं तो इंटरेस्ट रेट रिस्क, वॉट एवर इट इज, बोथ रिस्क में से एक कोई रिस्क का क्वेश्चन यूज टू कम फॉर 25 मार्क्स, राइट. सो आई यूज टू टेल अरे सेक्शन बी में 25 मार्कर आएगा. But somehow the examiner is now what? Tell me, changing. अब एक दूसरा पार्ट है, करेक्ट, दैट इज योर एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल. ये इधर फॉरेन एनपीवी दिख रहा है क्या आपको, टेल मी, दिख रहा है ये चैप्टर 3, राइट. ये जनरली 50 मार्कर के लिए सेक्शन ए में आता है, राइट, और इट कुड कम इन सेक्शन बी एज अ 25 मार्कर. दोनों ऑप्शन है. क्या मालूम दिल की एक तमन्ना थी, करेक्ट, कि ये दो क्वेश्चन साथ में आएंगे इन अ 50 मार्कर. सुन लो आप पूरा, राइट. एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल चैप्टर 3 फॉरेन एनपीवी प्लस रिस्क मैनेजमेंट का क्वेश्चन, फॉरेक्स रिस्क मैनेजमेंट, will come together in 50 marks. We had already put that out in the universe, or you would be surprised to know क्या हुआ एग्जाम में. टेल मी. कार्तिक, क्या आया था बेटा पहले 50 मार्क में? सेम सर. सेम आया था क्वेश्चन, मिक्स ऑफ व्हाट, फॉरेन एनपीवी एंड फॉरेक्स रिस्क मैनेजमेंट. मैंने एक क्लास में बैठ के जस्ट एज अ वाइल्ड प्रेडिक्शन करते हम लोग वैसे किया, 50 मार्कर उसी में से आया, राइट. ये मैं जो व्हेन आई वाज टेकिंग व्हाट these revision classes na, I just predicted, अरे maybe these two questions together, because what happens when I take forex risk management, first when I take foreign NPV, I take basic forex rules first, then I can go into foreign NPV, then when I go to again forex risk management, again I revise what all the rules. So मैंने बोला यार हो सकता है that this could come in one of the questions, correct, और cut copy paste वही क्वेश्चन आया. बिजनेस वैल्यूएशन जनरली ए में आता है, दैट केम इनटू बी, दैट इज लास्ट क्वार्टर आई एम टॉकिंग, अभी जो 6 जून को एग्जाम हुआ, करेक्ट. बिजनेस वैल्यूएशन एंड आई थिंक क्या था रे, टेल मी, कौन सा था रे, बिजनेस वैल्यूएशन था और दूसरा कौन सा क्वेश्चन था, आई थिंक फ्री कॉस्ट कैश ऑफ कैपिटल वाला. हाँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला आया था, राइट. हाँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल था, एपीवी वाला क्वेश्चन, करेक्ट. एपीवी और समथिंग रिलेटेड टू WACC वो वाला क्वेश्चन आया था.
risk adjusted WSCC and WSCC. So in exam, if you are like, no sir, हम book का ही question करेंगे, वैसा ही question आएगा, you can have what? A bouncer coming up in exam. But if you know all the concepts in detail, you will be 200% be able to what? Tell me, cope this or cope with this. आप टेंशन लो ही मत, बच्चों को आ रहे थे क्वेश्चन, राइट? See, logic is very clear. I don't know whether anyone has told you or not told you, but logic in AFM paper or any P level paper is very clear. एक मिनट रुको रे. Is very clear. What is the logic? I'll tell you. ठीक है? The amount of questions that you solve, right? 50% से ऊपर क्वेश्चन अगर आपने एग्जाम किट के सॉल्व किए, यू आर रेडी फॉर द एग्जाम. मैं बोल रहा हूं आपको, ठीक है? मेरी गारंटी. आप मोर देन 70% आप क्या एग्जाम किट सॉल्व करके जाओ, आपको 50-60 के ऊपर 100% आते हैं. द मोर क्वेश्चंस दैट यू सी, द मोर क्वेश्चंस दैट यू फोकस ऑन, द मोर प्रैक्टिस दैट यू डू, द मोर यू विल बी व्हाट? टेल मी, रिवॉर्डेड. अभी जनरली एज पर ACCA, करेक्ट, उनका बोलना है ये इतना पार्ट, दिस एंड दिस, ठीक है, दिस इज प्रोबेबल सेक्शन ए मटेरियल. मतलब सर आप बोलना क्या चाहते हो? लेट मी कंक्लूड. दिस इज सेक्शन ए, राइट? सेक्शन बी तो भाई कहीं से भी आ सकता है. सेक्शन बी हैज नो बाउंड्रीज. सेक्शन बी होल सिलेबस इज ओपन फ्रॉम वेर एवर सेक्शन बी कैन कम अप. अब सर इसमें क्या है इतना? कुछ नहीं. दिस फाइनेंसिंग डिसीजन इज अ थियोरी बेस्ड चैप्टर. डिविडेंड डिसीजन हैज थियोरी एज वेल एज व्हाट? प्रैक्टिकल, राइट? रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर इज ऑल्सो थियोरी बेस्ड चैप्टर. ऐसा बोलते हैं कि इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन जनरली आता नहीं. थियोरी आया तो इट कम्स इन सेक्शन बी. सेक्शन ए में जनरली थियोरी वुड कम फ्रॉम द चैप्टर्स दैट आई हैव हाईलाइटेड. देख लो वेदर दिस मेक्स सेंस और नॉट, राइट? Sir, can you please Generally, see, what is it? Advanced investment appraisal, cost of capital, right? Option pricing, risk management, business valuation, business reorganization, and reconstruction. This is ACCA saying that section A will come from these major topics only, correct? And section B के लिए the whole portion is open. So this I'll make you write also every chapter, whether it is fully theory, whether it is fully practical. वैसे आप you can have a look at it. So chapter 1, 4 and 5 are pure theory, right? थोड़ा डिविडेंड डिसीजन का सॉल्विंग है. फाइनेंसिंग डिसीजन में ऑल्सो सम और दी अदर वे थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, बट मेजरली दे आर थियोरी. ठीक है, तो एक टेबल भी बना लो आप चैप्टर्स का. ठीक है, सो यू हैव कंप्लीट क्लैरिटी ऑफ हाउ द चैप्टर्स आर. ठीक है, चैप्टर 1 ये ओके है ना? टेल मी. चैप्टर 1 फुल्ली थियोरी. ये कौन सा? कैप्लान बुक चैप्टर, एज पर कैप्लान बुक. चैप्टर 2 प्रैक्टिकल है भाई, पूरा पूरा प्रैक्टिकल. चैप्टर 3 मिक्स है, प्रैक्टिकल प्लस थियोरी. चैप्टर 4 आ जाओ जरा. चैप्टर 4 क्या है भाई? फाइनेंशियल डिसीजन. वो है थियोरी, मेजरली थियोरी. चैप्टर 5 इसमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है प्लस थियोरी, दोनों है. थियोरी भी है, प्रैक्टिकल भी है. चैप्टर 6, 7 और 8 तीनों लिखो. 6 और 7 तो लिखो. 6 एंड 7 मोस्टली प्रैक्टिकल है, बट थियोरी मिनिमम है. थियोरी बट कम है बहुत. चैप्टर 8, चैप्टर 8 तो बढ़िया चैप्टर है. प्रैक्टिकल, मोस्ट ऑफ प्रैक्टिकल प्लस थियोरी भी है. एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में थियोरी वाला, राइट? 1 or 2 questions, theory questions have been asked from this. chapter 9. चैप्टर 9 क्या है? 9 तो पूरा थियोरी. 9 पूरा थियोरी, इंट्रोडक्शन टू रिस्क मैनेजमेंट, राइट?
उसमें एक ही टॉपिक प्रैक्टिकल वाला है, एक या दो टॉपिक है, राइट, बट आई विल से मेजरली थियरी, करेक्ट। देन चैप्टर 10 एंड 11 पूरा प्रैक्टिकल है, आपको ज्यादा कुछ थियरी इसमें दिखेगी नहीं। देन चैप्टर 12 is a mix of theory plus practical. Chapter 13 पूरा most of practical है। Now you understand when I say जब पहले theory लिखता हूं तो more of theory है, पहले practical लिखता हूं तो more of practical है, right? Major practical but there is some theory. And chapter 14 last but not the least, उसमें theory ज्यादा है और प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल कम है, बट एक मिनट, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो आपको प्रैक्टिकल ज्यादा दिखेगा, तो ऐसा लिखो प्रैक्टिकल प्लस थियरी, ठीक है। दिस इज द ब्रेकअप ऑफ ऑल 14 चैप्टर्स। अभी क्लैरिटी है? टेल मी हाउ द पोर्शन इज, व्हाट द पोर्शन इज, हाउ वी आर गोइंग अबाउट इट, एनी प्रॉब्लम विद दिस, टेल मी। No, sir. Excuse me, sir. I'm यस, sorry to interrupt, but my friend want to join the meeting now. Can हाँ she तो join? दो ना, आप उनको लिंक दो ना मैडम, कोई प्रॉब्लम नहीं। Okay, okay. Thank you, sir. हाँ। ओके लग रहा है? टेल मी, वी विल बी एबल टू मैनेज, डोंट वरी। जहां जहां थियरी है वी विल डू थियरी नोट्स डिफरेंट, जहां जहां एप्लीकेटिव थियरी है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ थियरी हियर इन एएफएम। वन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड थियरी, मींस व्हाट, अब जैसे आप व्हेन यू गो थ्रू द पोर्शन, डू यू रिमेंबर समथिंग, कुछ याद है क्या? अपन कुछ करते थे इस्लामिक फाइनेंस एफएम में, याद है? मोस्ट ऑफ यू हैव डन एफएम, जिन्होंने नहीं किया छोड़ दो, बट हुएवर हैज डन, टेल मी, इस्लामिक फाइनेंस याद है क्या? इस्लामिक फाइनेंस, Yes, Yes, sir. sir. मुशा क्या था, मुशारका, मुराबहा, Sharaka. इजारा, सुकुक, क्या बोलते हैं, बराबर है ना? याद है? मुराबहा, मुशारका, ऐसा कुछ, आई यूज्ड टू डू सर्टेन एक्शंस, याद है ना? टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. मुदारबा, और रब्बा आई लॉस्ट माय मनी, दैट इज स्ट्रेट थियरी। मतलब क्या? स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखो और रिलेटिंग टू दिस राइट डाउन समथिंग, करेक्ट। बट ये चैप्टर फोर्थ है ना, फोर, राइट, फोर इज वेरी फनी चैप्टर। फाइनेंसिंग डिसीजन ये दिख रहा है, ये और डिविडेंड डिसीजन बहुत फनी चैप्टर्स है। दे हैव सर्टेन डायरेक्ट क्वेश्चंस, डिविडेंड डिसीजन में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, फाइनेंसिंग डिसीजन में देयर आर सर्टेन डायरेक्ट क्वेश्चंस कि ग्रीन फाइनेंस, डायरेक्ट क्वेश्चन, राइट। अब वही अगर मैं चैप्टर 1 में जाऊं, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, एप्लीकेटिव थ्योरी, आपको पढ़ोगे ना आपको लगेगा क्या है, दिस इज वेरी नॉर्मल, यही तो सब होता रहता है। इवन व्हेन यू गो इनटू व्हाट, टेल मी, ये बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, करेक्ट, इसमें जाओगे कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन में या बिजनेस रिकंस्ट्रक्शन में, आपको लगा क्या है, क्या तो फर्क पड़ता है, करेक्ट, यही तो सब, ऐसा एक के बाद एक थ्योरी है, राइट। बट इन बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑल्सो डायरेक्ट थ्योरी उधर देंगे, राइट, कि टेक ओवर करना है कंपनी को या कुछ ऐसे, बिजनेस वैल्यूएशन एक्विजिशन और बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन की जो थ्योरी है, आपको लगेगा यार सर डायरेक्ट तो थ्योरी है, राइट, दैट इज डायरेक्ट थ्योरी। बट कहीं कहीं फाइनेंसिंग में आपको एप्लीकेटिव थ्योरी आएगी, डिविडेंड में एप्लीकेटिव थ्योरी, राइट, चैप्टर 1 एप्लीकेटिव थ्योरी, राइट, फाइनेंसिंग में वन पार्ट ऑफ एप्लीकेटिव थ्योरी, वन पार्ट ऑफ डायरेक्ट थ्योरी, डिविडेंड में पूरा ही एप्लीकेटिव थ्योरी। डिविडेंड में तो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि सर कहाँ थ्योरी खत्म हो रही, कहाँ प्रैक्टिकल शुरू हो रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल एंड थ्योरी गो हैंड इन हैंड। So these topics that I'm telling you, right, are going to be topics where you need to focus on application of theory. जहां जहां मेरे को, मैं आपको बोलूंगा दिस इज लर्निंग थियरी, मतलब क्या, मेरा कुछ उसमें रोल है क्या, मैं स्टोरी बता के आपको, आई विल मेक यू राइट द नोट्स, बता दूंगा सारी स्टोरी, ऐसा 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 होता है, करेक्ट। रिमेंबर द 5-6 पॉइंट्स दैट आर देयर। सितंबर। क्या हुआ, किसी ने कुछ बोला क्या? हाँ हाँ, मैं क्या बोल रहा था, किधर था मैं, हाँ,
कि वो थियरी आई विल टेल यू दैट ये लर्न करनी पड़ेगी, ये 7-8 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स, वॉट एवर इट इज, यू हैव टू लर्न इट, करेक्ट। बट जिधर एप्लीकेशन है उधर बहुत डिस्कशन होगा, मैं अपना गला फाड़ फाड़ के आपको समझाऊंगा, ऐसा है, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, मैनेजर ऐसा बोलेगा, मैनेजर ऐसा बोलेगा, बराबर है, डायरेक्टर ऐसा बोलेगा, सीईओ ऐसा बोलेगा, राइट। दैट इज वन पार्ट ऑफ व्हाट, टेल मी द थिंग्स दैट आर देयर, राइट। नाउ इफ यू से सर ये पोर्शन ना मैप कैसे किया हुआ है, सर व्हाट डू यू थिंक, क्यों ऐसा पोर्शन है, राइट। अब those who have seen FM will know that basic FM, basic investment appraisal FM में हो जाता है, correct। Advanced investment appraisal for an NPV is what, tell me now, see I have my business is doing very good, FM में local business था, correct, AFM में international business है, international जोरदार, correct or not, right। वहां पे WACC था, weighted average cost of capital basics, वो तो इधर है ही, plus sir I want to go into some other business and sir NPV is not that effective, I want to use APV, adjusted present value, करेक्ट है क्या, बराबर है। सर इक्विटी डेट, ये दो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस याद है, टेल मी, नहीं भी याद है तो मैं बोल देता हूँ, दो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, व्हाट आर द टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, इक्विटी डेट, इक्विटी सर खुद की जेब से पैसा, डेट गेटिंग द मनी फ्रॉम व्हाट, टेल मी आउटसाइड सोर्सेस, अरे बढ़िया, करेक्ट। फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, सर पैसा कहां से आएगा, कितना आएगा, सर कमाई हो गई पैसे से, करेक्ट और नॉट, हाउ मच डिविडेंड टू गिव टू शेयर होल्डर्स, राइट। ऑप्शन प्राइसिंग, सर कुछ अलग ही सिनेरियो है, ऑप्शन प्राइसिंग, सर चलो एक स्टोरी बताता हूं आपको, उससे पूरा क्या है पोर्शन, लेट्स ट्राई टू व्हाट, टेल मी एस्टेब्लिश, राइट। अब आप में से कोई है who really wants to what do any kind of business, any kind of ऐसा कुछ एस्पिरेशन है किसी का, टेल मी, है या सबको जॉब ही करनी है, टेल मी एनीवन हु इज हैविंग बिजनेस एस्पिरेशन, सर मी तर बिजनेस करणार, ऐसा कोई है क्या, बोलो बोलो, मैं मेरा बोलूं क्या, देखो अभी अपना सुपर इन्फिनिटी एजुकेशन इंडिया में है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, करेक्ट। इफ आई डिसाइड बॉस एक ब्रांच यूके में खोलनी, करेक्ट, तो सर एवरीथिंग दैट विल हैपन इन पाउंड्स हियर, करेक्ट, बिकॉज यूके में सर यू कैनॉट स्पेंड रुपीस, वी आर इन इंडिया, राइट। सर पाउंड में, राइट, वेदर वी शुड गो अहेड एंड इन्वेस्ट इन अ फॉरेन व्हाट प्रोजेक्ट, अभी सर बट पाउंड में करके क्या फायदा, हमको तो इंडिया में कितना फायदा होगा वो देखना है, हमको क्या देखना है, वी वांट टू सी व्हाट, सर इंडिया में हाउ मच विल इट व्हाट सेव और अर्न मनी टू अस, सर ये पाउंड को कन्वर्ट करो एंड ब्रिंग इट इन रुपीस, तब जाके तो पता चलेगा वेदर पॉजिटिव एनपीवी और नेगेटिव एनपीवी, राइट। एनपीवी भी क्या है वो भी नहीं मालूम, कोई बात नहीं, गिव मी सम टाइम, राइट। आई वांट टू से एज ऑफ नाउ सर वेदर आई एम अर्निंग मनी फ्रॉम यूके और नॉट अर्निंग मनी, कन्वर्ट करके इंडिया में लाया, ठीक है कोई बात नहीं। नाउ इंडियन पीपल सिटिंग, अरे सर वी आर डूइंग क्लासेस बिजनेस में अभी बिकॉज ऑफ व्हाट रिसेशन वी आर नॉट एबल टू व्हाट, टेल मी डू बिजनेस, सर आई वांट टू गो इनटू सम अदर बिजनेस, लेट्स से रेस्टोरेंट बिजनेस, अभी सर एवरीवन इज ईटिंग आउटसाइड, रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट करते, अरे बट सर इधर नो अवर कैपिटल इज एट 10% पर एनम, राइट, बट सर रेस्टोरेंट बिजनेस में क्या करना सर, राइट, कैन यू यूज द सेम व्हाट कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द न्यू बिजनेस, सर नो सर, right, your risk of what classes business is different and risk of restaurant business is different, sir here if I invest 10 crore in classes business, no I will get 2 crore profit, but sir if I invest 15 crores in restaurant business I will get only 1 crore profit, that means can I say both the businesses are different and the return that you get from both the businesses are different, sir why return are different, because risk are different, sir classes में ना इतना investment is not required, right, सर एक लाइट, करेक्ट,
एक लैपटॉप, राइट, और एक अच्छा कैमरा और एक ऑडियो, राइट, क्या चाहिए, एक टेबल, राइट, क्या है 30-40,000, राइट। मेरा पूरा सेटअप जो मैं यहाँ बैठा हूँ, करेक्ट, इज बिलो 50,000, राइट। वो भी आई हैव टेकन 50 भी नहीं, बिलो 30,000 लिख लो, 30,000। मेरा लैपटॉप भी 21,000 का है, करेक्ट। अपन सब जुगाड़ू आदमी है, करेक्ट सर। बट रेस्टोरेंट चालू करोगे तो टेल मी, मेजर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्या, टेल मी। टेक प्लेस, टेबल, कुर्सी, एस्थेटिक, लाइट, वो सब करना पड़ेगा क्या, टेल मी। 5-10 लाख रुपीज, या रेस्टोरेंट ऐसे ही रास्ते पे खोलोगे, टेल मी। ऐसे नहीं होता है, राइट। तो सर क्या होता है, टेल मी, डिफरेंट बिजनेस में जाना है सर, करेक्ट। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, टेल मी। सर रिस्क को एडजस्ट करना पड़ेगा। This 10% per annum has to be adjusted for the risk of restaurant business, correct sir? From year to year we are going, correct, वो एक प्रॉब्लम है, तो रिस्क को एडजस्ट करना पड़ेगा, रिस्क एडजस्टेड डब्ल्यूएससी, करेक्ट और नॉट, राइट। देन एपीवी, करेक्ट सर, वो रिस्क एडजस्टेड डब्ल्यूएससी किया ना, उसके बाद एनपीवी नहीं एपीवी करो। अब वो क्या है, उसको थोड़ा सा आई विल कीप सीक्रेट। एपीवी इज वन ऑफ द मोस्ट लॉजिकल पार्ट ऑफ योर पोर्शन। अगर आपने ना एपीवी तक का पूरा जो क्या है जर्नी एकदम चकाचक निकाला ना, तो आपका एपीवी इतना स्मूथ जाएगा दैट यू विल नॉट इवन बिलीव कि इतना स्मूथली जा सकता है, राइट। और बच्चे बोलते ना सर एपीवी तो इतना लॉजिकली याद रहेगा ना, तो एनी थियरी क्वेश्चन आल्सो दैट कम्स अप ऑन एपीवी यू कैन आंसर। ये मेरा चैलेंज आपको, करेक्ट। तो एपीवी, करेक्ट। एनपीवी का बड़ा भाई एपीवी, करेक्ट। ये हो गया, ठीक है, रेस्टोरेंट बिजनेस वगैरह। यू नाउ हैव क्लासेस बिजनेस एज वेल एज रेस्टोरेंट बिजनेस। नाउ यू से सर एक काम करते ना, राइट, ये हम क्या करते, यूके में ब्रांच खोले ना, जाने दो सर, वो एनपीवी एनपीवी ठीक है, राइट। हम लोग ना यहाँ से एक्सपोर्ट करते सर्विसेज, क्या करते, एक्सपोर्ट, राइट। अभी भी हमारे इसमें हो रहा है कि आउट ऑफ इंडिया से भी स्टूडेंट्स है अपने, करेक्ट, यूके से है, यूएई से है, वी हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, करेक्ट। सर एक्सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं सर्विसेज, राइट। देन सर वी हैव टू बिल इन डॉलर्स, करेक्ट। तो क्या हो गया, इन दिस केस यू हैव टू व्हाट, अरे सर बट वी आर तो इन इंडियन रुपीज, इधर यूके का पाउंड, इधर डॉलर, सर सब टेंशन है, करेक्ट। कोई टेंशन नहीं, गो टू रिस्क मैनेजमेंट, करेक्ट। ट्राई टू मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क विद दिस, बराबर है क्या, विथ फॉरेन एक्सचेंज, बराबर है, हो गया, राइट। देन सर अभी ना 6 महीने बाद नया क्लासरूम लेना है, आफ्टर 6 months सर न्यू क्लासरूम इज रिक्वायर्ड। अरे सर ये जो पुराना वाला क्लासरूम है छोटा है, राइट। आफ्टर 6 months आई विल रिक्वायर 2 crores टू बाय अ न्यू क्लासरूम। इतना पैसा नहीं लगता है, 50 lakhs, 50 lakhs रे, इतना पैसा है भी नहीं, ठीक है, पैसा कम है अपने पास, राइट। कितने लोग मेरे को, आप में से कोई मेरे को मिला नहीं है ना, टेल मी पर्सनली, कोई मिला है मेरे को, नहीं ना। मैं कितना ऐसे एकदम सिंपल वाला आदमी हूं, आप किसी को मालूम नहीं, राइट। मुंबई में मैं था तब स्टूडेंट्स मिलते थे, ठीक है। पुणे में अभी अल्तमश और अफीफ आते थे, राइट। बट अपन एकदम सिंपल आदमी, 20 लाख का न्यू क्लासरूम लेने का है सर, आफ्टर 6 months यू रिक्वायर 20 lakhs, राइट। राइट नाउ द रेट, मेरे को सर बोरो करना पड़ेगा 20 लाख, बिकॉज आई डोंट हैव 20 लाख विथ मी। तो सर आफ्टर 6 months नो सर, राइट। राइट नाउ इफ आई गो टू बोरो 6% per annum इज द रेट, एग्जाम्पल, एवरीवन आई टॉक विथ एवरीवन इन द मार्केट, अरे अगले 6 months में इट विल गो टू 9% per annum, बराबर है क्या। तो इज देयर अ रिस्क, ऑनेस्टली टेल मी, रिस्क है क्या, टेल मी, कि सर आज 6% है, इफ यू वेट 6 months, क्या इंटरेस्ट रेट्स इन इंडिया ऑल्सो फ्लक्चुएट, टेल मी, या नहीं, बोलो, फ्लक्चुएट होते क्या इंटरेस्ट रेट, टेल मी, या नहीं होते, Yes, sir. डू दे फ्लक्चुएट, राइट। इंडिया में अभी बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन, मैं बता सकता हूँ आपको, होम लोन चल रहा है मेरा, करेक्ट, इट स्टार्टेड एट 8.6%, अभी 8.25% पे आ गया, तो कितना डिक्रीज हुआ, टेल मी, बोलो, 0.35% से डिक्रीज हो गया। अभी आप बिलीव करोगे, अगर मैं आपको बोलूं दैट व्हाट आई डिड, आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आता है, यू नो द टर्म ईएमआई, टेल मी, एवरीबॉडी नोज ईएमआई और नो, यस सर। ईएमआई मालूम है। अभी मेरा देखो मैं आपको बताता हूँ, 1 crore का लोन है, कितना, 1 crore, राइट, फॉर 25 years मेरा लोन था।
EMI आता है कुछ 73,000 के आसपास। हाँ, हम लोग ये भी लर्न करने वाले हाउ टू व्हाट डू दिस EMI का कैलकुलेशन। व्हेन वी डिड दिस, कुछ लोन का परसेंटेज 8.60% था, बेस्ट इन द मार्केट था वो टाइम पे, राइट। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट आई डिड इज 8.6 से जब रेट 8.25 पे गया, आई टोल्ड देम कीप द EMI सेम बट डिक्रीज द ईयर्स। क्या करो, डिक्रीज द, वुड यू बिलीव ये 0.35% खाली इंटरेस्ट गिरा। कितने साल मेरे इसका, कितने EMI मेरे बचे होंगे, और हाउ मच अर्ली विल आई बी एबल टू पे माई लोन। क्या लगता है आपको, ये कंसेप्ट तो मालूम है आपको? टेल मी कि EMI सर 73,400 है, कुछ 72-73,000 है, राइट। तो हमने EMI सेम रखा, बट क्या किया, टेल मी, पीरियड कम कर दिया। आप बिलीव नहीं करोगे, नाउ माई लोन इज ओनली फॉर 23 years. हाउ मेनी ईयर्स डिड आई डिक्रीज बिकॉज ऑफ जस्ट 0.35% सेविंग्स? 2 years का लोन, दैट मीन्स नाउ इट इज ओनली 23 year लोन। आगे अगर रेट गिरते गए तो मेरा लोन बहुत जल्दी रिपे हो जाएगा क्या? यस। Yes, 2 sir. साल कम हो गए, EMI सेम EMI अमाउंट, राइट। सी जनरली इफ आई टोल्ड हिम कि नहीं 25 years ही रखो, तो ही वुड हैव सेड नो सर, चलो ठीक है 70,000 आपका EMI। इधर डिक्रीज द अमाउंट ऑफ द EMI और डिक्रीज द पीरियड, राइट। आपको ये आने वाला है, ये हम लोग APV में करेंगे, दैट्स व्हाई आई गिव यू एन एग्जांपल कि ये लोन जो है, राइट, इफ यू टेक इट ऑन व्हाट EMI और EYI आएगा उधर, इक्वेटेड ईयरली इंस्टॉलमेंट, हाउ टू रीपे इट एंड हाउ टू डू थिंग्स, करेक्ट। Okay, so this is what, tell me, this is something, so RBI changes rate, PLR आपको मालूम है, there is something called as PLR, prime lending rate in India. All banks use that rate as guidance to set interest rates. चलो यहाँ तक ओके, इंटरेस्ट रेट रिस्क। देन सर अभी फैला हुआ बिजनेस है, रेस्टोरेंट, व्हाट क्लासेस, यूके क्लासेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब कुछ है। सर क्या है, 2 ऑप्शन है। सर बिजनेस बहुत अच्छा चला, करेक्ट, उसको वैल्यू करो, किसी को बेच दो, राइट। आपको रिसेंटली मालूम है सीए क्लासेस में बहुत बड़ा मर्जर हुआ, आइडिया है? एक बहुत बड़ी सीए क्लास सेल हुई, मालूम है क्या? अमाउंट्स आप सुनोगे तो यू माइट बी शॉक्ड, राइट। आपको मालूम है क्या नहीं मालूम है, यू कैन गूगल, राइट। भवर बोराना, बीबी बोलते हैं उसको, करेक्ट। भवर बोराना की क्लासेस है सीए के, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है DT, डायरेक्ट टैक्सेस, यानी सीए का डायरेक्ट टैक्सेस पढ़ाते हैं। उस आदमी ने अपना सारा बिजनेस 150 करोड़ में बेचा। कितने में? कितने आते थे जीरो 150 करोड़ में? 150 करोड़ में सारे, उसका पूरा जो नेटवर्क है ऑल ओवर इंडिया, वेरी वेल नोन फैकल्टी, 150 करोड़ में ही सोल्ड द होल बिजनेस। मुंबई का ये भी मुंबई का ही है, दिस बीबी के क्लासेस। देन जेके शाह, राइट, ऑल्सो वेरी ओल्ड सीए टीचर, करेक्ट। उनका भी कुछ बहुत, कुछ लोग 400 करोड़ बोल रहे हैं, बिजनेस इज सोल्ड। आप गूगल कर सकते हैं। वेदांतु नाम की कंपनी, आई डोंट नो वेदर यू नो, वेदांतु, वेदांतु या वेदांता कुछ ऐसे बोलते हैं, वेदांतु ही है मेरे हिसाब से। दे हैव ब्रॉट दिस बिजनेस सीए का, बोथ दीज पीपल, 600-650 करोड़ दे हैव इन्वेस्टेड, राइट, इन बोथ दीज व्हाट ब्रांड नेम्स। तो सोचो आपको क्या करना है आगे जाके। तो ये सब वैल्यूएशन कैसे निकाला होगा रे? 150 करोड़, 150 करोड़, 400 करोड़, हाउ वुड यू अराइव टू दिस वैल्यूएशन? आना ना, बिजनेस वैल्यूएशन, राइट, वहां सीखेंगे। सर ये तो बिजनेस चल गया, नहीं चला तो क्या, राइट, या तो बंद करना पड़ेगा, लिक्विडेशन का ऑप्शन, रीऑर्गेनाइजेशन में, या रिकंस्ट्रक्शन। सर बैंक के साथ बात करो, बहुत लोन हो गया है, उसको रिपे कैसा करेंगे? सर थोड़ा इक्विटी शेयर होल्डर को बोलो और पैसा दे, करेक्ट। डेट होल्डर्स के साथ रीऑर्गेनाइज द लोन, और ऐसे और 10 लाख का EMI 5 लाख का कर देते हैं। ऑल दीज थिंग्स व्हेन यू गो एंड टॉक विद बैंक, go and talk with supplier, go and talk with what new investors, all this is what, tell me, क्या बोलते हैं, tell me, पार्ट है रिकंस्ट्रक्शन, नियर लास्ट का रीऑर्गेनाइजेशन है, रिकंस्ट्रक्शन। ओके, द होल सिलेबस हाउ इट इज मैप्ड, टेल मी। अब ना एक पार्ट रहेगा ऑप्शन प्राइसिंग का। अब देखो मैं आपको बोलता हूँ,
ठीक है, कि आप एक बिजनेस चालू करो, राइट, या मेरे को कोई बोलता है सर आपने सुपर इन्फिनिटी चालू किया ना, आप टेंशन मत लो, राइट, आप 5 साल चलाओ, कितने साल चलाओ, 5 years, राइट, हमको मालूम है आपका धंधा चलेगा, 5 साल बाद हम आपको 10 करोड़ देंगे, कितना देंगे, 10 करोड़, तब ये बिजनेस आप हमको सेल कर देना, क्या कर देना, आफ्टर 5, आज ही हम बोल रहे हैं आपको, मैं क्या बोल रहा हूं, टुडे ओनली यू आर टेलिंग मी सर 5 years के बाद ना ये बिजनेस हम आपको 10 करोड़ देंगे और बिजनेस खरीद लेंगे, हमको मालूम है यू विल मेक 10 करोड़ का वैल्यू, बराबर है क्या, हम आज ही लिख के देते, राइट, वी आर गिविंग यू एन ऑप्शन, मतलब आई हैव एन ऑप्शन एट द एंड ऑफ 5 years सर, करेक्ट, व्हाट ऑप्शन डू आई हैव, you have made an offer to me that sir right now you start working, after 5 years now you can sell this business to me at 10 crore, correct, I have two options, either continue the business after 5 years, correct, or give away the business to you after 5 years, but sir वो वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, वेदर 10 करोड़, अभी देखो एज एन इंडिविजुअल यू हैव मेड एन ऑफर टू मी, मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग, टुडे आई हैव टू थिंक अबाउट इट कि यार आज मैं अगर कुछ कर रहा हूं तो विल इट वर्क फॉर 10 years 15 years और ओनली मेरे को 5 year का विजन रखना है, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, या नहीं, टेल मी, यू गेव एन ऑफर 5 years, नाउ व्हेन आई एम प्लानिंग शुड आई प्लान 50 years 60 years में ऐसा बिजनेस करूंगा, और शुड आई प्लान ओनली फॉर 5 years बिकॉज आई एम गोइंग टू सेल द बिजनेस आफ्टर 5 years, थोड़ा सोचो ना, थिंक अबाउट इट, टेल मी एम आई ऑन द राइट पाथ और नॉट ऑन द राइट पाथ, बोलो, मैं 50-60 years का सोचूं या 5 years का सोचूं, उसके लिए आई विल हैव टू डू सर्टन कैलकुलेशन, क्या बोलता है ऋतिक, टेल मी, Yes, sir, for 5 years. कुछ तो सर ये ऑप्शन है मेरे पास आफ्टर 5 years का, सर उसका आज का वैल्यू कितना है या क्या वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट 10 करोड़ टुडे, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लूजिंग, उसके बाद सर बिजनेस नहीं कर पाऊंगा तो कोई कैश फ्लो नहीं आएंगे, करेक्ट, तो दैट आई हैव थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, तो आप क्या करो, बेसिकली व्हाट विल हैपन, सो व्हाट यू शुड डू इज सर 5 years पे कुछ तो कैलकुलेशन करना पड़ता ऑफ द ऑप्शन दैट यू हैव इन हैंड, तो इसी को बोलते हैं ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल, क्या बोलते हैं सर, इसको प्राइस निकालना पड़ेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट ऑप्शन आफ्टर 5 years, वो है आपका ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल, इसमें इन द होल सिलेबस, नाउ डू यू हैव अ रोड मैप ऑफ वेयर यू आर इन द होल पिक्चर, राइट, मैं वैसे वैसे आपको लेके जाऊंगा, आप डरो मत, ठीक है, बट आप गाड़ी में बैठने से पहले किधर जा रहे हो, कौन से स्टॉप आएंगे, करेक्ट, कैसे किधर किधर खाने पीने के लिए रुकना पड़ेगा, राइट, पेट को कैसे तैयार करना पड़ेगा खाने पीने के लिए, करेक्ट, राइट, सोना है नहीं सोना है, कहाँ सोना है, ठीक है, कहाँ स्टॉप लेना है, सब चीजें मैंने आपको बता दी, नाउ द जर्नी, ऑल द डिटेल्स ऑफ द जर्नी आर गिवन टू यू, अभी जर्नी शुरू करने का वक्त आ गया है, बराबर है क्या, टेल मी, आर यू ओके विथ ऑल दिस वॉट एवर आई टॉट, एनी प्रॉब्लम विद दिस, आई होप आपने चैप्टर वाइज जो सब ब्रेकअप है वो लिख लिया, ऊपर सारे चैप्टर्स मैप कर दिए, पेपर पैटर्न लिख लिया, टेल मी कौन सा सेक्शन ए में आएगा, कौन सा सेक्शन बी में आएगा, अगर किसी ने वापस मेरे को ये पूछा, राइट, तो मैं बताऊंगा, और 2-3 बार बताऊंगा, राइट, 15-20 बार पूछोगे तो नहीं बताऊंगा, एफएम की एक बैच थी, क्या मालूम क्या प्रॉब्लम था उसमें, क्या मालूम, मेरे को कम से कम ये वाला एएफएम तो नहीं बट एफएम में मेन चार्ट मैंने कम से कम 13-14 बार बताया होगा क्लास में, आप 1-2 बार और पूछोगे तो मैं बताऊंगा, चौथी पांचवी बार फिर बोलूंगा इधर जाके देख लो, ठीक है क्या, सब क्लैरिटी है आपको, आपको एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, एक भी चैप्टर का किधर हाफ मेजर्स अपन लेने वाले, एवरीवेयर वी आर गोइंग टू गो इनटू फुल डिटेल, तो यू डोंट वरी अबाउट दैट, राइट, तो अब एक काम करो, एक बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल शुरू करते हैं, उसका खाली टेबल बना दो, फिर आई गिव यू ब्रेक, ठीक है, आ जाओ, ओपन अप अ न्यू पेज, ये हो रहा है क्या सिंक,
ठीक है, बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, आ जाओ। याद करो, 3 डिसीजंस फाइनेंसिंग किधर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, FM फाइनेंशियल मैनेजर, कॉमा डिस्काउंटिंग, एन्युटी। याद है क्या कुछ एन्युटी ऐसा कुछ? परपेचुटी, व्हाट इज एन्युटी, व्हाट इज परपेचुटी? देन वी विल गो टू फुल फ्लेज NPV। उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। वी हैव रिलेवेंट कॉस्ट्स या रिलेवेंट कैश फ्लो लिखो। देन यू हैव इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन हो गया, फिर टैक्स इम्प्लीकेशन। इधर लिखो ऐसा, प्रॉफिट वर्सेस कैश फ्लो भी आएगा, कहीं ना कहीं छोटे टॉपिक्स है सब। टुडे वो छोटे वाले टॉपिक्स वी विल गो इनटू। टैक्स इम्प्लीकेशन हो गया, उसके बाद इधर क्या है भाई? हाँ, वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट। हर एक का छोटा छोटा टेबल बनेगा, राइट? चलो मैं टेल में वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, फुल फ्लेज NPV, इसके बाद वी हैव IRR प्लस उसका बड़ा भाई MIRR। MIRR is nothing but modified. What is IRR? Internal rate of return. And what is MIRR? Modified internal rate of return. Then you have from payback period plus you have a discounted payback period. Payback period plus discounted payback period. इसमें आएगा प्लस मैक्वलिस ड्यूरेशन प्लस मॉडिफाइड ड्यूरेशन। ROCE. What is the full form of ROCE? Return on capital employed. फिर लास्ट वाला कैपिटल रैशनिंग। In capital rationing, we had 2 types of capital rationing. One is single period capital rationing, which was in FM. FM में था. Now here you have multi-period capital rationing. ये बेसिक चार्ट है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का। एनी डाउट यार? नो सर। ब्रेक लेते क्या? You want to take a small break? Tell me. 15 minutes, right? So do one thing. Come back by 10:45. Stay in the meeting only. Don't leave the meeting. Off your camera. Mute yourself and go. Okay.
Everybody come back quickly, come back. आ जाओ quickly. Join in, guys. Are you all back? Can we start? Can we restart? Chalo, everybody back. Can we start, guys? Yes, sir. Chale. Vishnu got mic. Back. Chalo, everybody back. Kushal, Kirti, Karthik, Kanishka. Sir. Yes, sir. Yes, sir. आ जाओ. Yes, sir. How many of you are in Mumbai? Tell me, Mumbai. Mumbai. Chalo. Anyone who's not added in the group and is in the meeting, tell me. I will add you into the group. जल्दी बोलो. Karina, I think Karina joined अभी ना. हाँ, हर्ष, okay. And Karina, 2 लोग हैं जितना मुझे याद है. So kindly, right? एक काम करो. I'll leave my number in the what chat. ठीक है. आप मेरे को अपना नाम मैसेज कर दो और AFM ग्रुप में ऐड कर दो. बोल के क्या करो? टेल मी. आया क्या मेरा नंबर आपको सबको? टेल मी. हर्ष गॉट इट? कनिष्का, आप अपने फ्रेंड क्या दोनों को ऐड किया क्या आपने? सर सिर्फ करीना ही ऐड हुई है मेरे ख्याल से। सर हर्ष को मैंने लिंक भेजा था हाँ सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो इन दोनों का मेरे को नंबर भेज दो, मैं इनको ग्रुप में ऐड कर दूंगा. ठीक है, हाँ ओके सर. चलेगा मैडम? राइट. यस सर. संजना भी आई है. रूपल मैडम कैसे हो? बस रूपल इज बढ़िया सर. our old batch student, right? FM. रूपल मैडम had called after exam. क्या मैडम बराबर है ना? यस सर. रूपल मैडम बोले थे आई एम गोइंग टू फेल FM. मैंने बोला था आपको 60 प्लस आएगा. मैडम का स्कोर भी अच्छा था. बराबर है ना मैडम? यस सर. हाँ, तो अभी AFM भी आप टेंशन मत लो. राइट. वी हैव संजना ऑल्सो. करेक्ट. संजना इज ऑल्सो देयर इज अ ओल्ड बैच स्टूडेंट. FM में थी. यूकेडेक्स तो एग्जाम था ना तुम्हारा संजना? यस सर यस सर. हाँ, FM में संजना वाज देयर. राइट. चलो बढ़िया है. राइट. कोई मुंबई से नहीं है. चलो बढ़िया है, अच्छा है. कोई भी नहीं ना मुंबई से? टेल मी. बेस्ट. चलो. हाँ, मेन चार्ट किया ना रे हमने बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का. आ जाओ, लेट्स गो अहेड. राइट. पुणे पीपल कोई है? हाँ, पुणे में जो 2-3 लोग हैं. राइट. वो कल ये है क्या बोलते हैं, रैंकर्स का सेरेमनी है. राइट. किसी को ज्वाइन करना है? मैं शायद गाड़ी लेके जा रहा हूँ. अगर आना है तो अभी आप अगर मेरे को बोलो. रैंकर का फेलिसिटेशन वगैरह है. मेरे को इनवाइट किया गया है. आप अगर बोलो तो आपका मैं नाम दे दूं तो काम हो जाएगा. अगर जाना है तो मेरे को मैसेज करना. ठीक है, तो क्या कंपनी हो जाएगी जाते जाते, बाकी कुछ नहीं. ठीक है. मेन चार्ट हो गया. आ जाओ अभी. लेट्स फर्स्ट राइट. हाँ, कोई कुछ बोला कह रहे? कौन बोला, क्या बोला? अरे नहीं, ठीक है. चलो चले क्या बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में? चले. राइट. 3 डिसीजन ऑफ FM याद करो, ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर. आ जाओ. व्हाट आर द 3 डिसीजन ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजर? याद है क्या? ऑफ अ फाइनेंशियल तो नहीं बोलना चाहिए, फाइनेंस मैनेजर लिखो. फाइनेंस मैनेजर. मैनेजर इज अ डैमेजर, है कि नहीं? क्या है 3 डिसीजन? बोलो जरा. व्हाट आर द 3 डिसीजन? इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस। फाइनेंस एंड डिविडेंड. इन्वेस्टमेंट डिसीजन,
financing decision. And last but not the least is the dividend decision. Right? Investment decision. What does investment decision signify? Chalo, write down. First, let me explain. Investment decision means what? Sir, I have 4 options. I want to start a new business. Either, sir, I can invest in what? Tell me. 4 locations are there, sir. Pune, Mumbai, Kolkata, Delhi. Right? Sir, in these 4 locations, where should I invest my money? Right? How much should I invest in short-term assets? How much should I invest in long-term assets? Correct? All that signifies investment decision. So you go and become a finance manager of a company, right? You are the manager of the company, and basic decision or the first decision you will always have to take whether to invest the money, right? And where to invest the money, correct? And should it be invested for long term or short term, correct or not? Should it be invested for long or short term, correct or not? So write down in investment decision. Aajo. Investment decision, where to invest the money. अभी इधर ना आप देखोगे वेयर टू इन्वेस्ट जनरली फाइनेंशियल व्हाट रिसोर्सेज होगा, बट आप मनी भी लिख सकते हैं, वेयर टू इन्वेस्ट द मनी. फिर सेकंड क्वेश्चन क्या होता है जनरली, हाउ मच टू इन्वेस्ट. इन शॉर्ट टर्म एसेट्स और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज. शॉर्ट टर्म एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स, LTA. शॉर्ट टर्म एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स, करेक्ट. अब सर वी वांट टू इन्वेस्ट, लेट्स से सर पुणे, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, करेक्ट. तो इफ ऑल दीज 4 ऑप्शंस आर गिवन टू यू, करेक्ट. सर पुणे में नॉट 10 करोड़, या मुंबई में 10 करोड़, या दिल्ली में 10 करोड़, या कलकत्ता में 10 करोड़. सर इफ आई इन्वेस्ट 10 करोड़ ना पुणे का आफ्टर 5 years, करेक्ट, सर आई विल गेट बैक एक कुछ, सर सारा मिलजुला के 15 करोड़ आई विल रिसीव. मुंबई में आई विल रिसीव 16 करोड़, दिल्ली में आई विल रिसीव 13 करोड़, कलकत्ता में आई विल रिसीव 18 करोड़, राइट. राइट. तो विच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर यू, पुणे, मुंबई, दिल्ली और कलकत्ता? टेल मी. कोलकाता. ऑब्वियसली कोलकाता, 10 का 18 मिल रहा है, करेक्ट और नॉट? टेल मी. सो ऑब्वियसली बेटर इज व्हाट सर? कोलकाता, करेक्ट और नॉट? नाउ सर 10 crores investment I have to do, right? Sir, whether what should be the investment? Sir, full investment in what? Machinery. That means long-term assets. Or sir, 9 crores in long-term asset, 1 crore in short-term asset. Short-term asset मतलब क्या? Tell me, can you do? See, if I do everything, सब machine सब कुछ लगा दिया, right? सब कुछ कर लिया, right? Will I honestly tell me, only by doing that much, सच में बोलो, from tomorrow can I start working? मशीन आ गया, अरे बट व्हाट अबाउट रॉ मटेरियल, व्हाट अबाउट व्हाट एनी लेबर दैट इज रिक्वायर्ड. खाली मशीन में मटेरियल डाल दिया तो फिनिश प्रोडक्ट पैकिंग होके सारा रेडी होके हो जाएगा क्या? नहीं. मशीन में से देयर आर 10 प्रोसेसेस दैट विल हैपन, 11th प्रोसेस में सम लेबर इज रिक्वायर्ड. सो सर वो लेबर, मटेरियल, अदर एक्सपेंसेस, सर टू रन द मशीन इलेक्ट्रिसिटी विल बी रिक्वायर्ड. All these are what? Short term or short term requirements, or are what? Going to be payables or receivables that are there, correct? So working capital or working of the day to day working. So you say sir 9 crore in long term, 1 crore in short term. काम खत्म. Tell me how much to invest in short term, long term. बराबर है. Then financing decision. Sir 10 crore चाहिए तो सही, correct, but लाओगे कहाँ से, right? From where would you get the money? That is own funds और लोन, या इसी को बोलते हैं इक्विटी और डेट. उसमें भी क्या, हाउ मच टू फंड from equity and how much from debt. उसमें भी
How much short term? How much long term? Short term finance, long term finance. ठीक है? All these aspects will be tested. ये सारे aspects in the syllabus going ahead, it will be tested, right? Sure. उसके बाद dividend decision. Dividend decision. अभी तुमने सब सर get the money from somewhere, invested, business going on great, you get profits, correct? Profit में से how much dividend you should pay, that is a question, right? How much should be reinvested in business? How much should be reinvested in business? ये सारे चीजें aspects will be checked. Sir, 10 crore profits, 5 crore dividend given, 5 crores reinvested or retained earnings in the business, correct? Okay, everybody, tell me. Can I go ahead? अब आ जाओ थोड़ा कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग पे चलते हैं. पहले लिखो फ्यूचर वैल्यू, एग्जाम्पल लिखो. If I invest $100 today, interest rate is equal to 8% per annum. How much will I get after 4 years? A, by simple interest method. B, by compounding interest method. चला आ जाओ. अभी मैं क्या करता हूं मालूम है क्या? एक टेक्निक मेरे को अभी जो समझ में आ रही है, करेक्ट. अब कुछ कुछ चीजें मे बी फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला आई विल डिराइव, बट सम थिंग्स ऑफ एफएम इफ आई टेक अ बिट क्विकली, सुन लो. तो मैं क्या करूंगा, एफएम वाली जो रिकॉर्डिंग है अबाउट इन डिटेल फॉर 9 पेपर एग्जामिनेशंस, आपको वो चीज देखनी है तो आई विल पुट दैट अप समवेयर ऑन योर एलएमएस. ठीक है, कि एक प्रोडक्ट के अंदर अगर मैं कर पाऊं तो एफएम बेसिक्स, राइट, डैश कुछ आरओसी हो गया और समथिंग ऑफ दैट, इफ दैट सॉर्ट, इफ दैट इज देयर, आई विल ऐड दैट देयर ऑन द व्हाट LMS.
सो इफ यू आर 9 पेपर एग्जाम, एफएम का कोर पार्ट होगा जो एएफएम में नहीं है, बट आई हैव रिटन इन द टेबल, राइट? जैसे पेबैक हो गया या आरओसी हो गया और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, करेक्ट? दैट वो रिकॉर्डिंग में से आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है एट ऑल फ्रॉम एएफएम पॉइंट ऑफ व्यू, बट अगर आपको देखना है, राइट, तो आप देख सकते हो जो जो इंपॉर्टेंट है एएफएम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई विल गो फ्रॉम बेसिक्स, राइट? ठीक है, आई विल लेट यू नो, तुम डरो मत, वो कर लेंगे, राइट? बाय कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मेथड, ठीक है? चलो, कैन यू हेल्प मी? ए पार्ट, $100 यू इन्वेस्ट टुडे, 8% पर एनम, बोलो 8% पर एनम कैसा करेंगे? बोलो बोलो, देखो कैसा करते। सी सम टाइमलाइन आई विल ड्रॉ। $100 इन्वेस्टेड, करेक्ट? हाउ मच विल आई गेट आफ्टर 4 years? ये हो गया फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 year। चलो डू द कैलकुलेशन। सिंपल इंटरेस्ट मेथड, हाउ डज सिंपल इंटरेस्ट मेथड वर्क? बोलो, एवरी ईयर हाउ मच इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड? टेल मी। 8. $100 इंटू 8%, यानी $8 होगा। एवरी ईयर विल यू रिसीव $8? $8। इसमें कोई डाउट है किसी को? टेल मी। सो इफ आई से दैट $100 आई इन्वेस्टेड आफ्टर 4 years, आई विल रिसीव हाउ मच? बोलो, 100 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, कितना मिलेगा बाबू? बोलो, 132. $132। बराबर है क्या? एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम यार? सिंपल इंटरेस्ट मेथड, यानी इफ आई वांट टू ब्रेक अप फ्यूचर वैल्यू बाय सिंपल इंटरेस्ट मेथड, कैसा करूं बताओ मेरे को? व्हाट इज द फॉर्मूला? सर प्रिंसिपल $100 प्लस सर 100 इंटू 8% इंटू हाउ मेनी ईयर्स इज द लोन? टेल मी। फॉर कितने साल है? 4 years बोला है, 5 year बोला रे? टेल मी। 4 years 4. बोलो, इंटू 4 करे तो आंसर आता क्या? देखो जरा। सो $100 प्लस क्या आएगा ये बोलो? $32। आर यू ओके विद दिस और नॉट ओके? तो मेरे को बताओ ना, फ्यूचर वैल्यू बाय सिंपल इंटरेस्ट, तो फॉर्मूला क्या आएगा बताओ? व्हाट इज $100? $100 इज प्रिंसिपल और इंटरेस्ट? टेल मी। प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन या इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट? बोलो, प्रिंसिपल अमाउंट है $100 या इंटरेस्ट अमाउंट? बोलो, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल बोलो, प्रिंसिपल इन्वेस्टेड टुडे और प्रेजेंट वैल्यू बोलू तो भी चलेगा, प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्टेड टुडे। दोनों वर्ड में कोई प्रॉब्लम है? टेल मी, एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? व्हाट डू यू से कुशल? प्रिंसिपल इन्वेस्टेड टुडे, राइट? प्रिंसिपल इन्वेस्टेड टुडे, कनिष्का क्या लगता है, सही जा रहे क्या? टेल मी। प्लस यस सर। यही जो प्रिंसिपल इन्वेस्टेड बोलो या क्या बोलने का आपको, पीआई और प्रेजेंट वैल्यू वॉट एवर यू वांट टू से, मल्टीप्लाइड बाय द इंटरेस्ट रेट परसेंटेज, मल्टीप्लाइड बाय क्या किया? 4 क्या है? टेल मी, व्हाट इज 4? 4 क्या है? पीरियड या एन बोलू? टेल मी, पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट और एन? एनी प्रॉब्लम विद दिस? बोलो। तो अगर अगर एक मिनट, तो पीआई यानी प्रिंसिपल इन्वेस्टेड और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू और पीआई इनटू इंटरेस्ट रेट परसेंटेज इनटू एन, बराबर है क्या? दिस इज द फॉर्मूला। इफ आई टेक पीआई और पीवी आउटसाइड कॉमन, तो क्या होगा फॉर्मूला? टेल मी। कॉमन लेता हूं मार, इंटू 1 प्लस क्या होगा? ये ब्रैकेट होगा इंटरेस्ट रेट परसेंटेज इंटू एन। ये फॉर्मूला ओके है क्या, या ये फॉर्मूला ओके नहीं है? बोलो। One question, let's say whether you can use this formula and do it. चलो, वन क्वेश्चन। अरे चलो मैं ऐसा बोलता हूँ, $500 आपको करने का जरूरत, लिखने का जरूरत नहीं। $500 इन्वेस्टेड एट 7% फॉर 7 years, हाउ विल यू फाइंड आउट? बोलो। चलो चलो, कनिष्का, कुशल, हर्ष,
विष्णु, चलो क्विकली सॉल्व. करीना सॉल्व करो. कीर्ति, रूपल मैडम सॉल्व करो. कैसा करेंगे? 500 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ये ब्रैकेट में क्या लूं? टेल मी व्हाट इज द रेट? टेल मी. 7%. 7%. सर इसमें हाँ. एक्सपोनेंट में पावर नहीं आएगा n का? एन का ये सिंपल इंटरेस्ट है मैडम या कंपाउंड इंटरेस्ट है? अभी तक तो सिंपल 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 चीजें करा रहा हूं ना. तो क्या आएगा? टेल मी. 1 प्लस ब्रैकेट में क्या करूं? 0.07 इंटू 7. क्या लगता है? 7% को आप 0.07 बोल के लिख सकते हैं. तो निकालो कितना आता है. 500 इंटू 1 पॉइंट कितना आएगा? 0.07 इंटू 7 कितना आएगा? टेल मी. 1.49. 1.49. तो कितना आएगा ये? 500 इंटू 1.49 80 कुछ आता है ना? 745. कितना? 745. 745. एवरीवन गेटिंग दिस आंसर? ये तो सिंपल इंटरेस्ट है बॉस. कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ी है. कंपाउंडिंग है क्या? टेल मी. सिंपल इंटरेस्ट है दोस्त. सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? टेल मी. 500 इंटू 7% एवरी ईयर. क्या क्या हमने 7% एवरी ईयर. करेक्ट. यानी 35 35 35 जुड़ता जाएगा. फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 7 ईयर्स. सी वेदर दिस वर्क्स विथ यू. कुशल, व्हाट डू यू से? वर्क्स बेटा? Yes, sir. व्हाट अबाउट कनिष्का? बोलो. ठीक है. Understood, आर यू sir. गोइंग ऑन द राइट ट्रैक? Sir, this हाँ. principle will remain fixed. Principal will remain. I invest today 500 only. Tell me, yes or no? Correct. Chalo. Now can we go to by what method? What is the second method that we have written? Bolo. Second Compound method. interest rate. Compound interest rate. So write down heading compound interest. This is what we are going to. This is never going to be asked in exam. Never ever. Simple interest method does not exist in finance at all now. Correct. But it creates a base for compound interest. ठीक है ना? What is compound interest? Have a look. Right. Sir, 100 invested. Again coming back to the main question. 100 invested 4 years. 1, 2, 3, 4. Correct. And what is the rate? I think 8%. No, I gave rate. Bolo. 8%. No? 8%. Sir, $100 invested today. I want amount at the end of 4th year, sir. Right? But sir, compound interest means what? Sir, 0 year say if I start at the end of first year, if I had gone and taken the money back, right, at the end of first year, so it would have been 100 plus 100 into 8%. That is how much? Tell me. 108. If I had gone at the end of first year, ये तो okay है क्या? इसमें कोई problem? Sir, 100 basic principal plus interest I would have got of $8. But sir, if I had reinvested it for 1 more year, then what would have happened? Tell me. Your 108 plus. Now, can I do this 100 plus 8%? No, no, no. What I should do? Tell me. Sir, this 108 again reinvested at 8%. So, plus 100 into 8% or 108 into 8%? Tell me. बोलो. 108 into 8%. ये कितना आएगा फिर सेकेंड ईयर के एंड पे? टेल मी. 116.64. 116.64. 116.64. Right? Then again 8%. Sir, again invested. Correct? 116.64 plus. Should I do 108 into 8% or should I do 116.64 into 8%? Tell me. Everybody. What do you say? 116.64 into 8%. Bolo, how much is that? 125.97. 125.97. 125.97. Last but not the least, sir. 3 years so we are not. At the end of 4th year we want the money. So 125.97 plus karu. 116 into 116.64 into 8 or 125.97 into 8%. 125.97 into 8%. Add both of them. Tell me what is the final answer. Bolo. 136.04. $136.04. एंड में $136.04. ठीक है क्या? टेल मी. मेक सेंस और डज नॉट मेक सेंस? टेल मी.
और ऐसा अगर 10 years पूछा तो 1 year you have to go क्या? Tell me, I have found out $100 invested now. After 4th year, you will, or at the end of 4th year, you will receive how much? Tell me. Up you were receiving how much? 132 something, Nare? 132. Here you are receiving how much? Bolo. 136.04. Sir, why extra? Because compounding has happened every year. On the first year end amount, you are calculating 8%. Second year end amount, that is reinvestment that happens. Correct? Are you okay with this or not a very strong logic? Bolo. Any problem with this? Tell me. Bolo, 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 bolo. Alright. What do you say? Kushal, okay with this? Tell me. Yes, sir. Understood. Understood. Can I go ahead? Yes, Vishnu, sir. what do you say, beta? Vishnu, okay with it? How the calculation is happening? Tell me. Yes, sir. Yes. Chal. Now then, sir, aisa nahi, sir. Give us formula. Correct. Let me derive the formula. Give me 1 minute. Now see, can I say at the end of first year 108? How did you calculate 108? Sir, 100 plus 100 into 8%. Are you okay with this? Tell me. Or can I write it like this? See whether this works with you. 100 into 0.08. Is this okay with you, everyone? Any problem with me writing this into a bracket and this into a bracket? Now if I take 100 common outside, 1 plus 0.08, right? That is 100 into 1.08. Are you okay with this or no? Tell me. So 108 is equal to what? 100 into 1.08. इसमें कोई problem? Mathematically, logically? Tell me. Or better way I'll write it. What? Tell me this is better. 1 or into bracket 1 plus 0.08. इसमें कोई problem? Tell me. चलो, let's go one more step ahead. Second year का formula can I put up? Have a look. 116.64. How did you get 116.64? Can anyone tell me? What did you calculate? बोलो बोलो. What did you calculate? 108 plus क्या किया? Tell me. Bracket में 108 into 0.08. Here, is everybody okay with this? Tell me. Any problem? बोलो बोलो. Tell me. Quickly. Any problem with this? Can I go ahead? Yes, sir. You have to say yes, no. ऐसा you have to show what? हाँ, तो 108 को फिर can I write 100 into 1.08 plus bracket में 100 into 1.08 into 0.08. Now if I take 100 into 1.08 common outside, right? तो ऐसा कुछ फॉर्मूला आएगा क्या? 100 into 1.08 into 1 plus 0.08. देखो समझ में आता है क्या? That means 100 into what? 1.08 square, right? Tell me. यही 116 कैलकुलेट करो ना. 116.64 इक्वल टू है क्या? 100 into 1.08 स्क्वायर करो. Whether the formula is okay. बोलो. See ऐसा कुछ कैल्सी if you have a look. Do you have this kind of calci? देखो 1.08 raised to 2 into 100. Is it coming to 116.64? That means is this formula foolproof or not foolproof? Tell me. बोलो. Foolproof है क्या formula? Or whatever derivation I have done, is it foolproof? That only means ये 116.64, is it future value? That is the money that you will get after 2 years, or is it present value? The money that you invest today. 116.64. What is it? बोलो. Quickly. Money that you will get. Future value or present value? Tell me. Future value, right? और 100 क्या है? Today's investment value or the money that you will get after 2 years? बोलो. बोलो बोलो. 100 investment यानी present value, correct? Present value of investment multiplied by 1 plus interest rate or R as they call it. Raised to 2 is what? Sir, number of years after which you will receive the money. That is raised to n. That is raised to n.
देख लो, 1 plus interest rate or R is nothing but the discounting rate. This is called as a discounting or compounding rate, whatever. It is the rate, compounding or discounting, whatever you want to do. Is future value formula okay with you? Tell me. That means, 1 minute, if I said now that boss 700 at 9% for 6 years, how will you calculate? Tell me. Present value means what? 700 invested today. So tell me, future value of that you have to find out. Today's whatever future value you have to find out. 700 multiplied by क्या करूँ? Tell me. 1 plus what should I do? बोलो बोलो. 1 plus 0.09. 0.09. The whole raised to what? Tell me. 6. 6. Find out. 1.09 raised to 6. So how do you do? How do you do it? बोलो. एक second. चलो, 700 into 1.09 raised to 6. 700 into 1.09 raised to 6. कितना है आंसर? Tell me. Do you want me to do? 73.97. 11.97 73.97. $0.97. ठीक है क्या? Any problem? Kanishka, what do you say? Tell me. Karina, what do you say? विष्णु, जमता है क्या हमको? Tell me. Yes, sir. हर्ष क्या बोलता है? हर्ष is there? Okay with it? Tell me. चलो आगे. अब लिखो, यही फॉर्मूला से कैन वी फाइंड प्रेजेंट वैल्यू. लिखो हेडिंग प्रेजेंट वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू. देखो अभी आपने फॉर्मूला क्या लिखा है? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 plus r raised to n. ऐसा लिखा है क्या? Therefore, if I have to find, rearrange the formula and find the present value, कैसा करेंगे? Tell me. This 1 plus r goes that side. So how will you write? Future value divided by 1 plus r raised to n. बराबर है क्या? And if I open this up, छोड़ो ओपन मत करो, आ जाओ देखो. Example, write down. Example. You will receive. देखो wording how it is changing. You will receive $721.26 after 4 years. Interest rate on investment या डिस्काउंटिंग रेट, ऐसा लिखो. डिस्काउंटिंग रेट इज इक्वल टू 10% per annum. Obviously compounding interest, correct? Calculate present value. Investment, यानी how much you will have to invest or amount to be invested today. Four years देना रे. 2, 3, 4. At the end of 4th year, how much you are going to receive? Tell me. At the end of 4th year, how much you are going to receive? बोलो बोलो. कितना अमाउंट दिया है?
721.26. right? And you have to find how much you will receive today. You have the future value formula. देखो जरा future value का formula क्या है? Present value multiplied by what? 1 plus r raised to n. Therefore present value कैसा निकालोगे? Tell me. Therefore rearrange the substitute the formula. Future value क्या है भाई? 721.26 is equal to present value you don't know, multiplied by 1 plus r. How much is the r? Tell me. 1 plus कितना? Tell me how much is 1 plus r? Tell me. 0.1. 0.10 and raised to how much? How many years after are you receiving this amount? 4. 4 years. Therefore present value is equal to what? 721.26 divided by 1.10 raised to 4. Correct? Tell me how much is the present value. Can you find on the calci? Do you know how to find this on the calculator, or you want my help? Tell me. बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. If you need help, tell me. 492.63. Yes. 492 point 63. 63. देखो, there is no harm in asking right now if you don't know how to calculate it, because once I go ahead then we cannot go back to this. Okay, चले क्या? Tell me, do you want me to do it? करूँ? 1.10 raised to 4, right? 1.4641. 7 to 1.26 divided by 1.4641. देखो उधर आ रहा है क्या? 492.63, right? अरे but sir, ऐसा every time are we going to do? Not required. Correct? Now see the basic formula of present value that we have derived. What is the formula that we have derived, sir? Future value divided by 1 plus r raised to n. Tell me. Therefore can I rearrange this and write future value into 1 divided by 1 plus r raised to n? And sir, if I bring this up, कोई भी अगर denominator में I want to bring it to numerator, correct? Right? Then in that case, if it is any power, that power becomes negative. So 1 plus r raised to minus n. ऐसे होता है. मैथमेटिकल फॉर्मूला 9th 10th में सीखा था. करेक्ट? एंड सर दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज द डिस्काउंटिंग फैक्टर. क्या बोलते हैं इसको? डिस्काउंटिंग फैक्टर. राइट? अभी का 492.63. सर डिस्काउंटिंग फैक्टर का मतलब क्या है? अभी जिसको नहीं मालूम, जिसको मालूम है, ग्रेट. You have a discounting table from where you can derive or get this discounting का formula. Correct? आ जाओ जरा, है क्या डिस्काउंटिंग टेबल इधर? ये देखो, डू यू हैव द डिस्काउंटिंग टेबल और प्रेजेंट वैल्यू टेबल एज दे कॉल इट. नाउ व्हाट इज द परसेंटेज फॉर विच यू वांटेड टू फाइंड द फैक्टर? टेल मी. Percentage. How much is the interest rate for which? So what you are doing? Pulling this 4 year behind and bringing it to 0 year. 492 something, Nare? 492.63. What is the interest rate for which you have to find the present value? Tell me. 10%. How many years after का present value or discounting factor you have to find? Tell me. N कितना है? Tell me. 4 years. Now see, don't be surprised. ये देखो 1 plus r raised to minus n लिखा है क्या? 1 plus r raised to minus n वही है. So 10% 4 years. How much is the value? Tell me. 10% 4 years. कितना है? How much is it? बोलो. 0.683. तो अगर मैं ऊपर वाला क्वेश्चन 721.29 समथिंग था ना, 721.26. हाँ, if I multiply 721.26 into 0.683, I will get almost similar answer to 492. कितना आता है? करो जरा कैलकुलेट. 492 for how much? हाँ, 492.85. 492.85. So difference, there will always be a difference, because when you do it on calci,
you take up to what, how many ever digits that are there. But when you do by the discounting table, correct, you take only the factor only up to 3 decimal points. So there will be a difference. That difference is acceptable in exam. You don't have to worry about it. Correct. So are you okay with future value का formula, present value का formula? Any problem with both the formulas? Tell me. कोई tension, query, problem, doubt, issue? चलो आगे फिर. Tell me. Yes, sir. Anybody, any problem? What do you say, Kushal? Were you okay with this formula? But now are you more clearer with the formula? Kanishka, what do you say? Kanishka Palande sir has taught you FM, or he is not yet introduced? Bolo. So we had FM last to last semester. वही पालंदे सर के बच्चे मतलब नो टेंशन. करेक्ट. पालंदे सर ले नो. Yes, sir. No tension. Correct. Right. So everybody okay with this $492.85? कोई problem है इसमें? Tell me. Can I go ahead? चलो आगे. Yes, sir. Right. Now let me move into Excel a bit. Can I go into Excel? Let me open up the Excel. Two things. These notes, two options I can give you. Correct. एक तो these are what? Tell me. Online है ये notes. So I can share the link with you. Right. Directly you can view in this format. Correct. Or second option, I will convert this into PDF and share it in your group every day. अभी तो आज का तो not required. From 21, 22 every day I will share it in your group. Right. So you can accordingly what? Have a look at it. ठीक है. चल. अब now let's move one more step ahead. Correct. I am moving to पहले I am moving to net present value, but before that I want to go into Excel. I want to open up an Excel for your batch. ठीक है. AFM September 25. New Excel sheet बाबा कुठे गेली? अरे Excel worksheet. ठीक है. AFM September 2025. Is the Excel sheet visible to you? देख लो. No, sir. अभी दिख रहा है? हाँ, sir. Yes. ठीक है. चल आगे क्या. देखो अब एग्जांपल देता हूं. ठीक है. एग्जांपल. You receive, right, $500 at end of year 2 and 600 नहीं छोड़ो $500 at end of year 5, right? Interest rate is 6% per annum. Correct. Interest rate is what? 6% per annum. Calculate present value. ठीक है क्या? Present value to be invested today. यानी मैं आपको 500 दूंगा at the end of 5 years, right? 6% per annum is the rate. Correct. So tell me how to do this. बोलो कैसा करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है आपके पास. टू वेज ऑफ डूइंग दिस. व्हाट आर द टू वेज? बोलो. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैसा निकालेंगे? इज इक्वल टू बोलो 500. या तो आप टेबल में जाओ. टेल मी कैन आई गो इनटू द टेबल? टेल मी डिस्काउंटिंग टेबल. 500 मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंटिंग टेबल में क्या ढूंढना? टेल मी. Here discounting table, can you see it on the screen? Tell me everybody. हाँ क्या करना पड़ता? Tell me. What do we have to do? 6% or 5%? What do you have to do? Look at the question. Tell me what rate should I use? बोलो बोलो. 6%. 6%. But इसमें से क्या करूँ? 1, 2, 3, 4. Which year? 5. 5 years. Correct. So what is the rate I should use? बोलो. 0.747. 0.747. This is one method of doing it. Into 0.747. ठीक है क्या? Any problem with this? Excel में easy गया क्या और भी? Tell me.
correct? Any problem with this? Now let me just go one more step ahead, then I'll leave you. ठीक है? Now अगर मैं आपको बोलता हूँ example, correct? You pay 1000 right now. So what I'll do, negative 1000. Investment means what? Tell me. Negative 1000. Investment means what? Negative 1000. You pay right now, correct? This is the net cash flow. What is this? Net cash flow, correct? You pay 1000 right now. Instead of giving you everything ऐसा कुछ combined at the end of 4 years, I'll give you 200 or 300 now, 500 in second year, 600 in third year, and 400 in fourth year. ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. टेल मी दैट यू गिव अस 1000 राइट नाउ, राइट? जनरली इंश्योरेंस पॉलिसीज में होता है दैट फॉर फर्स्ट 5-7 years यू पे सम मनी एंड देन फ्रॉम 10th year यू विल गेट सर्टेन रिटर्न्स. वैसा मैं बोल रहा हूँ, यू पे 1000 राइट नाउ, करेक्ट? प्रोजेक्ट बिजेक्ट छोड़ दो, राइट? आई विल गिव यू 300 आफ्टर 1 year, 500 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, करेक्ट? थर्ड ईयर के एंड पे 600 एंड द इंटरेस्ट रेट, या डिस्काउंटिंग रेट लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. डिस्काउंटिंग रेट इज इक्वल टू 10% या 8%. हाउ विल यू कैलकुलेट दिस? देखो, लॉजिकली स्पीकिंग, राइट, व्हाट वी आर डूइंग हियर, कोई बोल सकता है? टेल मी. Now see, I had given you one amount at the end of fourth year. You pulled that and brought it to 0 year, right? Everyone okay with this? Tell me. Yes. So what we need to do here? See, first year I'll give you 300, 500, 600, 400. First, second, third, fourth year. How to... Now see what I'm asking you. Calculate the present value of all future cash flows. Present value of what? All future cash flows. Yani, what are the future cash flows? 1000 is present cash flow or future cash flow? Negative 1000? Present. Present. So am I asking to do anything about the 1000 that is there? What No. I'm saying, find the present value of these 4 cash flows. What am I trying to say? So can you do that? Tell me. How to do that? बोलो. चलो, प्रेजेंट वैल्यू देखो, 2 ways. एक तो प्रेजेंट वैल्यू, करेक्ट? एक 1 year, 2 year, 3 year, 4 year individually you can find out. Can we do that? Why not? But AFM level पे हम लोग, how to do this? Tell me. See, now what did you do, sir? 300 multiplied by something will give you the present value. Tell me. So we make a table, sir. Sir, this only table we copy. We take the cash flow, sir. Correct? Correct? Sir, we put up the discounting factor, or discounting factor. At what rate are the discounting factor is going to be calculated? Tell me, what is the interest rate? 8%. Correct? Sir, ये 1000 तो अभी नहीं चाहिए. No problem. Sir, 8% at the end of first year, 300. What is the discounting rate? बोलो. Or what is the factor? Tell me. 8%. Year 1. 0.925. 0.926 बराबर है क्या? अपने को तो टेबल से लेना है अभी. For now, 9 to 6. Second year में how much will it be? Tell me. Second year कितना है? Tell me. 8% second year. बोलो. 0.857. 857. Third year, how much is it? 0.79. 0.794. Fourth year, how much it is? 0.735. अब ये मल्टीप्लाई किया तो विल यू गेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस? बोलो बोलो. दिस इनटू दिस. अरे सर, ऐसा टाइम होगा क्या इन एग्जाम? एवरीवेयर आई हैव मल्टीप्लाइड. In exam, will you have time go to that table, some all that stuff? Will you be able to do it? Not really. Correct. Now you've got the present value of future cash flows, right? This is by method 1. This is what? Method 1, using discounting table. ठीक है. Now इसके बाद मैं क्या बोलता हूँ?
compare the present value of all future cash flows. Correct? Compare the sum लिखता हूं. Compare the sum of present value of all future cash flow to the investment made today. And tell us whether the investment is worthwhile or not. क्या पूछा रहा है मैंने? Tell me. Now tell me what is the sum of present value of all future cash flows. Sum निकाल सकते हैं? Tell me. Sir, first year brought to zero year, second year का cash flow brought to zero year, third year cash flow. So what you are doing basically, you are pulling all the cash flows. Am I on the right track? Tell me. And bringing it to 0 years. Correct? What is the sum of all of them? Can we find the sum? What is the sum, Re Baba? Tell me. Of all the 4 cash flows. 76. कितना है? Tell me. 1476.7. Everyone getting? How much is the initial investment? Tell me. Initial investment you have to do today. 1000. Tell me. What is the net present value? See, initial investment is in negative. You have got inflow of how much? 1476. This plus this. 476 NPV. This is called as, sir, all the future cash flows का present value compared with initial investment or today's present value. Correct? If sum of present value of all future cash flows is higher, क्या होगा? Tell me. NPV. This is the basic explanation of NPV. Are you okay with this? Anyone having any problem? Tell me, net present value or NPV is positive. Is the project worthwhile or not worthwhile? Tell me. Sir, you are It is getting worthwhile. value of 1476. Tell me yes. Someone was saying something. It is worthwhile, sir. It is worthwhile. Everybody else, Vishnu, what do you say? Kushal, Yes, sir, it is worthwhile. are you okay with all these calculations? Tell me. Yes, sir. Yes, sir. Right? All okay with the sum formula? Tell me, anybody having problem with the sum formula? हो सकता है. Okay. I am asking. Tell me. This plus this formula, everybody okay with it? Tell me. Now, sir, this is the one method of doing it. Sir, this is long cut, right? Same question. I'll just change the question a bit. Sir, shortcut बताओ ना. If I had told you, calculate NPV. Correct? How we would have done it? Sir, simple. This is done. Again, I copy paste the cash flows. I hope everyone knows selection, copy paste. उसमें कोई problem? Let me होगा तो बताओ. Right? Then, sir, I would put the discounting factor at 8%. Correct? Sir, abhi I don't want to go to the table. Correct? So I could have done like this. Have a look. 1. Today's value 1000 का value 1 only. Correct? Sir, first year का discounting factor 1 divided by 1.08. Tell me. Raised to 1. Okay or not okay? Is equal to, sir, 1 divided by 1.08 raised to 2, sir. Put the bracket here. 1 divided by 1.08 raised to 2. Then, sir, is equal to 1 divided by 1.08 raised to 3. बराबर है क्या? Tell me. Then is equal to 1 divided by 1.08 raised to 4. Everybody okay with this? This could also have been an option. Tell me. ये भी option था. Method 2. 1 divided by 1 plus r raised to n. ये formula भी method 2 okay था. Then we would have found discounted cash flows. Right, sir? 1000 तो today 1000 only negative. And sir, all the cash flows here. Tension ही नहीं. Correct. Sir, 300 multiply almost similar cash flows. Have a look. 277.8. वही same cash flows है इधर. Have a look. Okay क्या देखो. Hey, this we want. What? Up to 3 decimal points. Any problem with this? Have a look. And sir, if I find direct net present value, can I direct find net present value?
is equal to sum of all the values is net present value. Almost similar. 476.7 अपना 476.8 because you are taking what more decimal points here. This is method 2 of finding NPV. इसमें कोई problem? Tell me. Discounting factor, how I calculated discounted factor? इसमें कोई प्रॉब्लम है? Now is the right time to ask me. हाँ? नहीं सर. Everybody? What do you say, Karina? Harsh? Roshan? Albina, what do you say, beta? Okay. Yes, sir. Chal. Yes, sir. Now, one more easy method of finding discounting factors. Last method. Correct? ठीक है, ऐसा भी कर सकते थे क्या? देखो. See, this is the most simplest method I have found out. Correct? देखो, आपने कैश फ्लो लगा लिए. Here you have to type the discounting rate, yeah, discounting factor 4 times, sir. 1 divided by 1.08 raised to 1, 1 divided by 1.08, all that stuff. Correct? I'll give you a better option. Is equal to left side divided by 1.08. सुन लो. This becomes 1, left side का 1 divided by 1.08. Enter. बराबर है. फिर I do copy and paste it here. आ गया क्या same answer? Tell me. What I did, now see second also what I did, this divided by 1.08. Sir, already 1 divided by 1.08, उसको अगर वापस 1.08 से डिवाइड करेंगे, correct? So it will become 1 divided by 1.08 square. Sir, 1.08 square को वापस 1.8 से डिवाइड करेंगे, it will become 1.1 divided by 1.08 cube raised to 4. This is method 3. Right? Method 3 is shortcut method. शॉर्टकट मेथड, कोई अलग मेथड नहीं है. दिस इज शॉर्टकट मेथड. ये आप यूज कर सकते हो. राइट? और अभी अल्ट्रा शॉर्टकट मेथड आने वाला है. क्या आने वाला है? अल्ट्रा शॉर्टकट मेथड. ये ओके है क्या? हाँ. वेरीफाई. लेफ्ट, यू डोंट हैव टू पुट 1. राइट? इधर आपने क्या किया, 1 डिवाइडेड बाय 1.08, वो नहीं करना है. यू हैव टू पुट व्हाट, फर्स्ट ईयर पे जाना है. इधर 1 यू हैव टू पुट फर्स्ट एट 0 ईयर. देन फर्स्ट ईयर पे जाके लेफ्ट डिवाइडेड बाय 1.08. लेफ्ट डिवाइडेड बाय, यानी ये कॉपी कर दिया. इफ आई हैव दिस डिलीटेड, दिस इफ यू कॉपी वंस, इफ यू पुट इट प्रॉपर्ली एंड कॉपी पेस्ट इट, तो 4 साल का बराबर एवरीथिंग विल कम करेक्ट फॉर ऑल द 4 years. करेक्ट? थोड़ा फास्ट जा रहा है, स्लो जाओ थोड़ा. टेल मी. और इज द स्पीड ओके? Oh, sir, it's okay. ओके. एवरीबॉडी, व्हाट डू यू से? Yes, sir, it's okay. ओके. Yes, sir, it's okay. ओके. हर्ष क्या बोलता है? मैडम, रूपल मैडम सही जा रहे क्या? टेल मी. हाँ सर. ओके सही सर. जा रहे? ठीक है. अब जो मेथड आप यूज करोगे, अल्ट्रा इजी सुपर शॉर्टकट मेथड, लास्ट वाला मेथड, इसमें तो आपको और कुछ करने का भी जरूरत नहीं है, खाली कैश फ्लो ले लो. ठीक है? आ जाओ मेरे साथ करो स्टेप बाय स्टेप. करेक्ट? मेरे साथ करो. डायरेक्ट एनपीवी निकाल सकते क्या? इज इक्वल टू एनपीवी फॉर्मूला आपके एग्जाम स्क्रीन में भी अवेलेबल है. रेट क्या है आपका? टेल मी. इज इक्वल टू एनपीवी लिखना, ब्रैकेट ओपन करना. इज इक्वल टू एनपीवी ब्रैकेट ओपन. करेक्ट? इज इक्वल टू एनपीवी ब्रैकेट ओपन. रेट क्या है आपका? टेल मी. व्हाट इज द रेट, डिस्काउंटिंग रेट? बोलो 8%. 8% लिखो. राइट? या आप 0.08 लिखो, दोनों चलेगा. राइट? मैं दोनों से करता हूं. पहले 8% लिखा, कॉमा करने का, उसके बाद कॉमा इंपॉर्टेंट है. राइट? फिर व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर के कैश फ्लो, 0 ईयर का कैश फ्लो अलाउड नहीं है डालना. फर्स्ट ईयर से लेके टिल द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, वट एवर इट इज. करेक्ट? वो करके ब्रैकेट क्लोज कर दो. क्या करो? वो करके ब्रैकेट क्लोज कर दो. रेफरेंस ऑफ फर्स्ट ईयर टू एंड ऑफ प्रोजेक्ट या एंड ऑफ कैश फ्लो. 10 साल के कैश फ्लो होते तो 10 साल तक लेते अपन. फर्स्ट ईयर टू एंड ऑफ प्रोजेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर दो. आपको
सारी. हाँ, have a look. Are we all on the same page? Tell me. देखो जरा. Am I audible, guys? Visible, audible? बोलो. Yes. Yes, sir. हाँ. So tell me, 8% कॉमा फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक का. फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक का. करेक्ट. देख लो जरा एक बार. First year to fourth year. Have you given the formula? Tell me. Don't close the formula bar yet. Don't close the formula bar. Right? उसके बाद आगे प्लस साइन डालो. प्लस साइन डालो. उसके बाद आगे प्लस साइन डालो. And then put up the 0 year का cash flow. Then put up 0 year cash flow. Correct? And then press enter. Then press enter. आ रहा है क्या एनपीवी? टेल मी मेथड 4. क्या बोलूं, शॉर्टकट या सुपर शॉर्टकट? टेल मी. क्या बोलती जनता? सुपर शॉर्टकट मेथड. अरे सुपर शॉर्टकट नहीं, उसको एनपीवी फॉर्मूला मेथड डालो. अभी एनपीवी फॉर्मूला इज अलाउड इन एग्जाम. ठीक है क्या? हाँ, बट आई हैव सीन रिसेंटली नॉट एवरी स्टूडेंट्स, राइट, एक्सेल शीट कुछ कुछ बार एग्जामिनेशन स्क्रीन में एक्सेल शीट डज नॉट गिव द एनपीवी फॉर्मूला. एट टाइम्स ऐसा हुआ है, नॉट एवरी टाइम. करेक्ट. एनपीवी एट 8%. सो टेल मी विच इज द बेस्ट मेथड. बोलो बोलो, क्या लगता है? कैसे एनपीवी निकालोगे? टेल मी. चलो. सो नाउ आर यू ओके विद बेसिक हाउ दिस हैपेंस, व्हाट हैपेंस? एक होमवर्क दूं क्या? टेल मी, कैन आई गिव होमवर्क? आ जाओ. All four methods you should calculate. You will get an understanding of all the four methods. Then I'll leave you. Correct? Homework. Calculate NP by all four methods. All four methods. ठीक है. Discounting rate is equal to 14%. ग्रुप में भी डाल दिए. ठीक है. होमवर्क ओके है क्या? टेल मी. Yes, sir. I put up the homework in the group as well. ठीक है क्या? देख लो. ओके है. चलो. Can I wrap it up for today? Tell me. You have a homework by four methods. This week you can enjoy your what? Tell me. Leisure time. Correct. Next week say I'm going to trouble you more. Okay. So next week say please what? Tell me. Take care now. Abhi. Now it will from next week. We'll next week अपना basic investment appraisal पूरा I think it will get over. Right, and we will probably step into foreign NPV. तो please stay vigilant on that part. Right, तो हम लोग foreign NPV next week at least we will enter foreign NPV. Next week basic investment appraisal you have your, tell me if you are from FM, correct? तो if you can invest full fledged or can you can revise full fledged NPV किया तो भी ठीक, नहीं तो भी I will take care of it. No need to worry about it. Okay. Anyone having any doubts? Can I wrap it up for today? Tell me. Recordings I'll put up by the evening. I'll put it up on YouTube and I'll share the link with you. ठीक है.
Chalo then guys, can I wrap it up? I hope the homework is okay. I put up the homework in what? Your group also, right? And whoever, right, has joined today, right? If you've joined midway, I'll put up the recordings. No worry, he is on that part. Chalo, can I wrap up? हाँ बोलो. So please share the link of those notes. हाँ notes का भी link share कर देता हूँ, ठीक है? I'll do that. No worries. Okay. PDF I'll share of the notes. ठीक है, शाम तक वो सारा कर दूंगा. अभी I have to go somewhere to some. आज actually I had to keep up to 1:30, but कुछ function I had to go there, right? So I kept up to 12. 11:30, quarter to 12. अब I'll go to the function. वो काम हो जाएगा, right? चलो then guys, bye bye. We'll meet what now 21st ना 21st को मिलेंगे. Till then, bye bye. Take care of your health. Bye bye. Thank you, sir. Thank Bye, you, sir. sir. Thank you, sir. Bye Thank bye you, bye sir. bye. Thank you, sir. Bye. Welcome. Thank Bye. you, sir. Bye. Bye.